Hello and good afternoon, dear friends. This is we, the mentors for the today's session on success at CA exam conducted by the BoS. Myself, Nisha. And myself, Megha. Welcomes to you all on this today's session on paper 2 of intermediate course, that is the corporate and other laws. Yes, it's the paper 2, dear friends, in the intermediate level. And of course, first, we would like to congratulate all those students, those who have cleared the foundation and have come into the intermediate level. And of course, this is a new step to go ahead with your preparation as well as your appearance for the examination for the intermediate paper. And for May 24, really, it's a great pleasure that we have come across with through this platform to just connect with you students directly and to take up your issues and concerns on the papers so that you can be passed and getting a good marks with the flying colors. In fact, what the thing is that, Megha, whenever the law names come before the students, especially before the intermediate level students, so they are somewhat scared and they are in the state of dilemma. Oh my God, the usage of the language of the law is really very typical, and it's a great problem in understanding of the students. And also, the law finds to be very vast, very explanatory at many times at certain places under the certain acts, which of course, little bit, it creates a concern among the students how to go with the preparation of the subject and how to read and retain the legal provisions, because the retention is really a great problem with respect to the legal provision under the law. And of course, if this paper, the intermediate paper, is a closed book, so there the retention and memorizing of the provisions, of course, plays a very important and significant role. So in that case, what is the thing that you need to take care? What are the key terms that you need to keep in your mind while reading and understanding of the question? And also the thing is that since all the provisions, if you see, they are one or the other way, they are interconnected, interrelated with the one provision or the other. So at that time, what happens? The students cannot skip any of the provision in between. If we skips any of the provision, then definitely it may possible the syncing or the linking of the provision is somewhere it's broken. And in that case, what happens? You have acquired incomplete knowledge that way. And that's definitely effects on your preparedness. So we are here, dear students, with you only to throw and enlighten you. What are the do's and don'ts that you should take care while reading and understanding of the paper? And also we shall be coming across with, what are the thing or the topics you can say that you need to keep in mind while reading and understanding of the chapters, and also shall be discussing a question also, how you can go with the solving of the questions, so that you tend to understand when you will be appearing in the paper, it will not be something new for you. You will be knowing that yes, that we have to answer in this manner, we have to pursue the case scenario in this manner. So that will definitely boost your confidence and you can proceed with your preparation as well. And I would like to start off with the session, but yes, the one thing is there in the mind, Megha, generally students, they see, so many laws. It's a very wide and many disciplines are being covered under the laws. So, dear friends, let me tell you, the thing is that when we talk about the law is not just the one branch. In fact, it covers many branches in itself. That means there are different categorization of the types of law. और अगर कोई ये बोलता है कि that why this law is required to be covered at the CA intermediate level. Dear friends, being a professional, when you are into the corporates, when you are providing a consultancy or running your own business of advisory or some sort of providing a consultancy on the legal issues to your customers, at that time, the knowledge of law is a very important aspect, because the law defines the rights, the law defines the duties, the law defines the compliances to run any of the businesses or to do any kind of the transactions which related to your business, occupation, profession or trade. So that way law is very important. And since law is very wide, very consisting of different sorts of the disciplines, so that is what has been categorized under different categories, my dear friends. And when we talk about the categories, why there's a need of the categories. Basically, when we require a systematic arrangement, there the categorization of the laws plays a very crucial role, because there we find that
the laws has been categorized on the basis of, the nature, the purpose, and the scope of the law. And whereby it has been covering the various principles, the rules, and the areas of law, and the different headings, you can say, under the different branches. So this will not only enhance the understanding, in fact, the interpretation and application of the legal framework. So before we start up with the broader categorization of the law, what are the broader headings under which all the different kinds of the laws falls, that would like to just bring to your knowledge? Because, knowledge is an ocean, and everywhere, from wherever you can grab the knowledge, just try to grab it. We should not restrict ourselves only to what is being covered under the curriculum or whatever is covered in the course. Being a true professional, you need to enhance, you need to grab, you need to acquire knowledge from wherever you can get it. And this attitude should be there, my dear friends. Being a professional, this attitude is necessary to learn from anywhere, from everywhere. And if this is the attitude, then definitely you are going to gain a lot into this profession. So let's see first our students, those who have greeted us. Yes, Ajay, then Ninad, Hardik, Dev Kumar, Ankita, and Atanu. Atanu. Yes, very good afternoon to one and all. Now let's start with the basic or broader categorization of the law. Okay, so let me just help you in understanding this part. Yes, now this is, I've opened a page for you so that I can just made you easy to understand what are the broader headings to understand the basic branches or the categorization of the law. So if you see, basically there are 4 categories of the law. If you see, okay, this is the law. The law can be basically law can be broadly divided into 4 parts, you can say. Okay. Yes, this is law, a broader law. Okay. Now, let's see. The first heading is we will give it private law and public law. Okay. This is one category of the law where you'll be finding the different laws are being covered under one of these headings. Then moving to the next important category is the substantive and the procedural law. Yes, the substantive and the procedural law is the another category, dear friends. Please take a heed, take a note, so that you can know about the basic understanding of the law. Got it, my dear friends? Now, moving to the third category is the civil and the criminal. Okay. Name reveals itself. What does it mean? What is going to cover within itself? What sort of the laws will be covered under this heading? And yes, the fourth category is the national and international law. So I will just try to explain in a one-liner to make you know what these categories are and what this nomenclature actually stands for, so that you can understand under what category, what sort of the laws that you are studying fall under which heading. Okay, the first is the private and the public law, my dear friends. If we talk about the private law, it regulates the relationship between the individuals and the entities. Name reveals relationship between the individuals and the entities. So what sort of the laws are being covered here? My dear friends, you have already studied the Indian Contract Act, where there's an agreement about the law governed between the individuals. And if you talk about tort law, tort is also a civil law. If we can say it's a law which deals with the civil wrong actually. So this also law which is covered under the private law. Now the next here is the public law. Public law means the law that deals with the government and the society. Clear? Government and the society. What sort of the laws will be covered over here, my friends? Yes. The law will be that will be governed under this heading will be the constitutional law. Dear students, please mute yourself and kindly raise your hand if you are having any query. Please raise your hand and mute yourself. Yes, friends. Yes. And we will ask one by one. And we are expecting that you also will be cooperating during the delivery of the session. Yes. Yes. It will be an interactive session. Yes. So yes, I was talking about the public law. It's a law that regulates the relation between the government and the society. So the examples were the constitutional law as well as the administrative law.
And now covered under the next heading, that is the substantive and the procedural law. Substantive law are the laws that defines the law, you can say the rights, the duties, and the obligations. Okay. And the procedural law is what? Procedural law outline the process of enforcing these rights. Okay. And thereby thus resolving the different disputes arising between the parties. So that way, if you take an example of the substantive law, again the Contract Act, because there it defines the rights, duties, and the obligations of the parties, those who have entered into the contract. And if you talk about the Partnership Act, again it's being, you can see it defines the rights, duties, and the responsibilities. So it will be a substantive law. If you talk about the Companies Act, so they are also the different kinds of the rights and duties and obligations of the, that the management, the directors are being defined over there. But when we talk about the operations, so these has been added through the help of the rules, because in certain acts, how that whatever has been given under the, the rights and duties as well as whatever shall be performed is to be bring into operation, that is given and governed by the rules. So that is why the government come out with the rules, and rules basically it lays down the operational part, how the company can be brought into operation, or whatever the transaction is to be made, whether the right is to be done, how it can be implemented or executed, that part is governed by the procedural aspect, that is being governed by the rules part. Okay, then civil law. Civil deals with the disputes between the individuals and the entities. Okay, and thereby they are seeking the compensation over there. If any cause of the wrong is done or any kinds of the damages is there, in that case, what it is, they will seek for the compensation or any kind of the special action. So that is the civil law. And when we talk about the criminal law, my dear friends, it addresses the offenses against the society, aiming to punish the wrongdoers, those who have committed wrong against the society. So in that case, you'll be finding the criminal law is there. Okay. And the last heading is, and the category is the national and the international law. National law, as the name reveals, the domestic laws. Okay. So these are the rules within a specific, you can say, a country that is regulated and governed is there. That is the national law. And when we talk about the international law, my dear friends, the international law governs the relation between the countries and the entities on a global scale. Okay, when it is done globally, on a global scale, then it is an international law. If you think what would be covered under the international law, then an international law, you will be finding Geneva Convention. My dear friend, this is the convention which deals with the humanitarian laws. And when you talk about the Montreal Protocol, the dear friend, this is, you can say, a global agreement between the countries with respect to the stratospheric ozone layer protection. So that the depletion of the ozone layer, how it can be safeguarded and how we can focus on the consumption of this particular ozone gas related products in order to reduce the ozone layer depletion. So that way it is an international law, and all the countries are being regulated and governed under this international law. So that way all the laws are broadly being fallen under these categories only. Okay, and this defines the nature and the scope, the different nature of the act. And that is why to easy understand our legal system, how it focuses, how it works, this broader categorization of the law has been given. But now when we come to our syllabus part, so we have come across with business law, corporate law. So is there any difference, my dear friends, between the business and the corporate law? Since already I told you that law is very vast and very, extended. So you will be finding that some terminologies find somewhere near to each other. They find to be similar. But yes, there is a difference. They are not related. They are not very much similar, you can say, but there are certain differences there in order to just distinguish what is the difference between the business law as well as what is the difference between the corporate law. When we talk about the business law, my dear friends, business law is basically also known as with name as mercantile law, the law that deals and governs and regulates the trade, commerce, profession, any kind of the business
that is the business law. And basically, if you see, the major area of works under the business law is dealt with relation to the regulation of commercial entities, right? And the other thing is with respect to the regulation of commercial transactions. These two are the major areas which are being covered under the business law. And when we talk about the corporate law, my dear friends, the corporate law, it focuses on the legal aspect, okay, with respect to governing the formation and the operation of the corporates. Got it? That is the corporate law. And mainly it deals with the activities of the, you can say, of the organization, then obligation of the administration, as well it preserves, and you can see the rights and the privileges of any investor or the shareholders. So that way, that is the corporate laws that deals with the corporates, how it will be formed and how it will be managed, how it will be operated. So this is about the basic difference. And now, since in the paper, our paper is the corporate and the other laws. So let's see what is the importance of this paper in this curriculum and how to proceed with. Yes, Mira. So many students have joined virtually and they are asking how to interact with us. Dear students, you can kindly raise your hand if you are having any query. So we will unmute each one by one for your queries. Ankita is asking how to interact. I think Ankita, you have joined the session. Miss Ankita. One question, Mr. Alok is asking, ma'am, my question is about CA Inter new batch for November 2024. I think the new batch will start very soon. And once the announcement is ready, we will host it on the website. Meanwhile, you can refer the recorded lectures of May 24 because the syllabus is same for May 24 and November 24. So you can see the recorded lectures for May 24 batch 1. And if there is any amendment, we will upload the amendments for November 2024 examinations as well. How to present the answer? We will take this question is sent by Ms. Yashvi Rauji. We will, during the 2 hours lecture, we will take this question. Yes, Nilesh, this is class for the Inter-Law paper, paper 2. Yes. Ma'am, Zoom link is not working. Dear students, around 100 of students have joined in the Zoom panel. So I think it's working. Kindly try again. Dear students, kindly log on your BoS mobile app. There is a push notification, and on their push notification, the Zoom link is provided. Kindly log in through that. Yes. Now we can take the session. Yes. Now moving to the syllabus part. Corporate and other laws. This paper has been divided into 2 parts. First part is your company law plus LLP. This is of 70 marks. Moving to other part, that is your other laws. It is of 30 marks. If we see the detailed bifurcation of these 2 parts, we can see that company law, there are around 10 to 11 chapters, and there is a separate chapter for LLP, and under the other laws portion, there are 3 acts covered for 10 marks each. The first chapter under other laws is your General Clauses Act, (1857), 1897. Then your interpretation of statutes, then the FEMA. This topic has been recently introduced. Earlier, it was covered under the final paper of corporate and economic laws. But now the introduction
of this topic has been introduced at the intermediate paper as well. And the detailed portion we have covered under our Set A self-paced module, that is corporate and economic laws. So you does not need to be fear of, my dear friends. Though referring to whatever is covered in the set is now being made a part of this. So my dear friend, let me say into introductory portion as Yes. Megha said to you. And of course, the difficulty level will also be, you can say there will be a difference in both the levels. And yes, the FEMA is very important economic laws. You can say very important part of the corporate laws. Because after the economic reform in 1991, somewhere it was felt that some strong law should come to regulate our foreign investments due to entrance of the various outside markets into the Indian markets led to this particular act to come into an enforcement. And also at that time there were many scandals and scams that came into into the notice of the governments. They have noticed various scams like IPL scam, Commonwealth scam in 2021 and at 2022. So therefore it was felt that these laws should be brought into the enforcement, and these are the acts which regulates the transaction related to the foreign exchange outside with India, with any kind of the foreign exchange transaction outside India. So that way somewhere this act plays a very crucial role, and that is why we just want our students to be well aware of this important legal statute, so that this will also be helping in their further preparation in the self-paced online model paper also that way. So these are the broader syllabus has been given and make it to be known by the Megha, so that before doing up anything, you should be aware of what are all the acts forming the part of your curriculum. One question we have received so many times: how to present the answer. Yes, dear students, if you are aware, if you have seen the introductory lecture of our LVC class held in September, I suppose, we have introduced to you that there are two types of questions being asked during the examinations. The first part is your MCQ. It is of 30 marks. And second is your descriptive paper, descriptive questions. Okay, so descriptive questions are 70 marks. Okay, if we move further, we can see that MCQs has further been divided into two parts. You have seen the earlier suggested paper also. MCQs have been divided into two parts, that is integrated case scenarios. Case scenarios क्या होते हैं? Case scenarios. Case scenarios, a small case study is framed, and on the basis of that case scenario, 3 to 4 MCQs will be asked. So while attempting these types of case scenarios, you have to read the case scenario minimum 2 times, and then you can go to the MCQ part. Okay, so under MCQ also there will be 4 options, and that 4 options will be very close in nature. So after reading the MCQ part, you can again read the case study, and then you can answer accordingly. For these MCQs portion, no reasoning is required. And OMR sheet will be given to you. You have to just mark and encircle the correct option. And second part of MCQs is independent MCQs. Independent MCQs will be independent, that means small case scenario where there will be only one MCQ. What is the difference between case scenario? Under the case scenario, small case study will be comprising of minimum 3 to 4 MCQs. But here under the independent MCQs, there will be one MCQ, but that will also be your application oriented. A small situation will be there, and the application will be tested. Yes. And now moving to presentation of answers. In the MCQs, we don't have to present our answer. We just have to mark the correct option in the OMR. The main question, the main presentation question comes here, descriptive questions. Descriptive questions, if we go detailed, we can see that descriptive questions are of two types. First is your KNC, knowledge and comprehension.
And second is your A&A. What is A&A? A&A is your application and oriented questions. Okay. So now the so many students have asked this question that how to present the answer, how to present the case study answer. If we see that knowledge and comprehension questions क्या होते हैं, इसमें आपका direct based questions आएंगे. Prepare, explain the provision of CSR. Okay, draft a brief note on this. So direct theoretical question will be there. To deal with the KNC questions, you can divide your answer in different paragraphs. You can give headings. You can divide your answer in different bullets. And if there is a need, if there is a requirement of the question, you can give the example also. Ajit, kindly look at the laptop just. Example. Yes. Now, so in this manner, you can write your KNC question. You can write your answer in different paragraphs. You can give the different provisions, different headings, and in the bullets, you can divide and example if there is a need of the question demands example, you can write the example for enhancement of the knowledge purpose. Okay. Sometimes the difference between two forms of LLP and Companies Act is given, and the marks allocated to it is of 4 marks. So you can write only 4 points accordingly, 1 mark each. So the descriptive questions are also the length of the question also dependent on the marks allocated to that question. Now moving to application and oriented questions. Yes, this is a very important part. एप्लीकेशन एंड ओरिएंटेड क्वेश्चंस में जैसे निशा ने हमें बताया था अभी कि छोटे छोटे केस सिनेरियोस हमसे पूछे जाते हैं. ये इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आल्सो एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव. कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए केस स्टडी बना के, नाउ दे आस्क द क्वेश्चन. तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट में वी कैन राइट द लीगल प्रोविजन. लीगल प्रोविजन हमें लिखना है ये. यस, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि लीगल प्रोविजन क्यों लिखना है? बिकॉज अंडर द सीए एग्जामिनेशन स्टेप मार्किंग इज देयर. So if there is a question of 4 marks, so it may be the possibility that 1 or 2 marks may be allocated to your legal provision. So legal provision you have to write with act name and year. Like if the question is based on your Companies Act, so you can simply write that according to section 135, we are taking the example of CSR again, according to section 135 of the Companies Act 2013, this is the provision. So you have to write the legal provision first in your application and oriented descriptive questions. Then secondly, what you have to write? You can very short facts of the question. Like क्वेश्चन में क्या डिमांड थी. ओके, सो आपने फर्स्ट में प्रोविजन बता दिया. सेकंड पैराग्राफ में डोंट मिक्स फर्स्ट पैराग्राफ विद सेकंड पैराग्राफ, डिवाइड करो उसको. थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या करना है? कोरिलेशन. अब आपने फैक्ट्स बता दिया, आपने लीगल प्रोविजन बता दिया, अब आप उसको कोरिलेट करोगे कि अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन ये प्रोविजन ये कहता है, अब मेरा आंसर उसके अकॉर्डिंग कोरिलेशन करके मुझे अपना आंसर फ्रेम करना है. ओके, so correlation is a very important point. So you have to correlate. Then moving to last part, conclusion. You can conclude your answer if there is a need. Conclusion, there is a least possibility you can write also, but there is not a compulsion. But these 3 points is a must. Okay, but keep in mind that if you are writing a conclusion, it should be correct. Okay, if you are confused, you have write. Sometimes क्या होता है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता बट मुझे उसका लीगल प्रोविजन बताए, तो यू कैन राइट द लीगल प्रोविजन एंड यू कैन कोरिलेट आल्सो, बट आपको उसका कंक्लूजन या क्रक्स नहीं पता, तो जस्ट अवॉइड इट. ठीक है, तो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, आई थिंक वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन. Yes. And even we have received many queries on our chat box also. Nikhil Agrawala has asked whether the citing of section or subsection is mandatory. Dear friends, this habit of writing and citing of sections and subsections should be inculcated as from this level only. Though, yes, it's not possible to retain each and every section or subsection. So you should at least try to retain some of the main sections.
Okay, main sections of the Companies Act. Even when you are reading any of the subject in the law, this should be made in habit that you should read along with the section number, the heading, and then the legal provision. So this will help you to retain the legal provisions along with the section number, and you should at least try to remember some of the main sections. And again, that Suman Verma has asked about the amendments. Whether we have to read the amendments also. Yes, dear friends, amendments are really very important, because a true professional is the person who is updated in its knowledge, who is updated with all the recent changes that are going in their subjects. Then only you will be able to, become a true professional in a true sense. And that way, you need to keep yourself amended. And it is also possible many times the questions are being asked on the amendments also. So whatever the amendments that are being relevant and applicable for you for May 24 examination is already given in the RTP as well as separately hosted on the website. My student is asking that study material, whether the study material April 2023 contains amendments. No, dear students, these amendments are not covered in the study material, because the study material was only up to 30th April 2023. Yes. So after that period, whatever the amendments are there, we have uploaded on the Yes, so we have separately website. come out Yes. with the other relevant amendments. So you need to go with all these amendments, dear friend. And even during the sessions, we will be taking up the amendments in details for your reference. Then again, the Kritika Tiwari has asked, when we have asked how to lay down the answers, so she has given very well replied, yes, the provision, then the facts and analysis of the same, where we are just pointing out the legal provisions and how within the preview of that law, within the scope of that law, the situations can be, they can be analyzed, and how the law can be applied as well. It shall be ended with a proper conclusion on the same. So that way, yes, Kritika, you are absolutely right. This is the way, these are the steps to write an answer. And even we have explained thoroughly how to go with it. So this is how, if you write your answers, definitely you'll be able to secure good marks. Yes. We have received one more query on our Zoom portal chat box. मैम, हमें बुकिश लैंग्वेज में प्रोविजन लिखना है, या हम अब हमारी लॉ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत नहीं आती, तो हमें हमारी लैंग्वेज में प्रोविजन लिख सकते हैं क्या? डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड वैलिड क्वेश्चन. यस, समटाइम्स क्या होता है, बच्चे हमसे यही पूछते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में लिखना है, तो हम वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस द वर्बैटिम. ओके, वट एवर वी हैव गिवन इन द स्टडी मटीरियल, हम लॉ की लैंग्वेज एज इट इज नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट एज इट इज. तो हमें क्या करना है, हमें अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, बट इंग्लिश के साथ साथ हमें अपना वी हैव टू राइट द लीगल लैंग्वेज. लीगल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे वी आर रीडिंग सम सेक्शंस, तो देयर आर सम वर्ड्स गिवन, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एनुअल जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, ओके, 25%, ये सब चीजें हमारी अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट 25% की है, प्रॉक्सी में कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें हमारी लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं. सो we have to write these legal terminologies in our answer, but as it is bookish language, we cannot write. The simple answer is that English language आपका अच्छा होना चाहिए, legible होना चाहिए, सही होना चाहिए, मीनिंग उसका करेक्ट आना चाहिए, प्लस आपका जो प्रोविजन आप कह रहे हो, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन की 75% की रिक्वायरमेंट है, या किसी प्रोविजन में मेजोरिटी 51% की रिक्वायरमेंट है, तो 51% का यू कैन नॉट राइट 50%. ओके, गवर्नमेंट कंपनी के केस में 51% आपका होल्डिंग होना चाहिए गवर्नमेंट का, तो हम उसको 50% नहीं कर सकते. इफ यू आर राइटिंग 50%, 51%, देन इट इज करेक्ट. सो जनरल क्लॉजेस के लिए भी जनरल क्लॉजेस के लिए इंटरप्रिटेशन के लिए यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. वी एक्सेप्ट that the language covered in other laws like general clauses and interpretation is tough as compared to Companies Act, but you can write in your own language, but whatever you are writing, it should be correct and legible. और सबसे बड़ी बात है इसको याद कैसे करना. तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, there is a method you can say that you can adopt. Just break the legal provision in a small paras, small points, you can say small sentences, and then each sentences should be in a bullet form. First make it crisp and short, take a small sentences, break it down, and then you read the important crux. And then you can relate, yes, first point is related to second point is related to third point. And when you read in relation, you'll be easily
you can retain what exactly the legal provision is, and also besides with that, you will be able to understand the concept, besides any of the legal provisions. Because when you read in relation to, you tend to understand ki, yes, first provision talks about ki who all are required to appoint someone. I'm just giving an example only, just ki how you can see if suppose we are talking about in case of, suppose if let's take the government company, okay, if you're talking about the government company, then what is the requirement for it? Ki by who shall be there? So there shall be a state government as well as there shall be central government and partly also. Then what shall be the respective shareholding? That should be known. So this is what first you should be break it down in a simplified manner, the definitions, and then you read it. So you will have a conceptual understanding also, and besides that, you will be able to retain that particular legal provision. So this is how you can go with the reading of the legal provision. Try to break it, okay? And then only we'll be able to understand. Even if you see in the study material, you'll be finding at many places. Whatever if you see in the barrack, the whole law is given over there. But when we have brought it into our study material, so we have broken down in the paragraphs. For example, you see the dividend chapter. If you see section 123 itself is very vast, coming into out various subsections. But yes, but if you see that the various that subsections has been broken down in a simplified manner under different headings in order to just have a broader understanding of how the dividend can be declared. So this is what we are saying. You read the study material to understand. First read the study material, and then if you require, you can go with the barracks also, because barrack give you the essence, the what exactly the law is. So it helps you while next time revising the law itself. First, you understand a simplified manner, whatever is given in the study mat, and if you want to read the law as it is in order to save your time, because you are through with the conceptual understanding. Now the thing is that you just want to retain the main key concepts given in the law, then you can refer the barrack at the same time. This is how you can go with the studies. Yes, then next. Yes. One student, Miss Bhumika Mittal, is asking, ma'am, is enough to practice only ICAI BoS Knowledge Portal MCQ? Dear students, the MCQs, yes, regarding the 30 marks MCQ portion, we have launched a MCQ dashboard where you can practice the MCQs and integrated case scenarios also. Along with that, you can see the MCQs available in the RTP. And case scenarios, we have given, I think, two case scenarios plus some MCQs we have given in the RTP. And the same similar 30 marks MCQ portion we have asked in our MTP 1 and MTP 2. Under MTP 2, we will ask two different case scenarios plus some MCQs. And what about that booklet? MCQs and integrated case scenarios. Yes, that booklet is also yes. Yes. And in fact, dear students, one more thing is there. When you are reading case scenarios, so this is not defined that only this will be coming from the, from this your course in the examination, but this gives an idea how the case scenarios can be framed. And also we just come across how you can reply to all those case scenarios in considering what are the relevant things that you should keep in mind when replying to any kind of the MCQ's nature of the question. Yeah, and one case scenario we will take today also. Yeah. We'll try to take one case scenario for your. Of course. Step marking is in law paper or not? Yes, dear students, step marking अभी मैंने आपको बताया कि step wise marking law के पेपर में होती है. तो आपको पूरा complete answer you have to write. If there is a legal provision requirement, तो you have to write the legal provision also. So step wise marking accordingly अगर आपको आंसर नहीं आता और उसका provision आता है तो you can write the provision. And जैसे आपका यहाँ पे I have specified that act name and year और section number. सेक्शन नंबर जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन 135. अभी निशा ने आपको बताया कि इफ यू हैव नॉट रिमेंबर द सेक्शन नंबर देन डू नॉट कोट इट. बट एक्ट का नेम एंड ईयर तो आपको याद ही होगा, तो यू कैन राइट इट बिकॉज कंपनीज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा एक्ट ओनली एंड LLP एक्ट, 4 एक्ट्स आर देयर इन अवर स्टडी मटेरियल. तो इनके नाम के अकॉर्डिंग यू कैन सिंपली राइट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ये प्रोविजन है. तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है लॉ में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखिए. यस अंकिता, अभी आपने मेघा ने आपको बताया कि आप अपने BoS मोबाइल ऐप पे जाइए, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, पुश नोटिफिकेशन पे जाके आपको जूम का लिंक दिया हुआ है. यू कैन सिंपली गो एंड लॉग इन थ्रू दैट So many प्रोवाइडेड students लिंक. have joined the Zoom link. Yes, Ankita, kindly Yes. go to BoS mobile app.
Ma'am, in K or C section is to write any points which are related to question because answer is given many points in ICAI study material. ICAI study material, I think she's asking that 7 points are given. We have to write according to No, marks. it's not like that. It depends upon the allocation of marks assigned to that particular question. If they has asked any question just for the 4 marks, and suppose there are 8 points, so you can give any 4 points, so Yes. that will justify your according to the weightage assigned. Okay, that way it could be done. How to memorize the study material language? Yes, dear students, स्टडी मटेरियल लैंग्वेज के लिए अभी जैसे आपको निशा ने बताया कि स्टडी मटेरियल के साथ आप अपना बेयर एक्ट रखिए. ओके, तो फर्स्ट अगर आपका कोई सेक्शन आप 120 आप कोई डिविडेंड का कोई प्रोविजन पढ़े हो तो पहले 123 जैसे सेक्शन आपका डिविडेंड के बारे में बताता है, तो जस्ट रीड दैट सेक्शन फ्रॉम द बेयर एक्ट. कर आपका बेयर एक्ट बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, आपका आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट का तो हर every 6 months it's changing. There are so many amendments in the Companies Act. Or you can go through the MCA portal also. If you are not able to purchase the BEAR Act, so you can open the e-book available on the mca.gov.in. So जब आप उसका BEAR Act पढ़ोगे तो 50% प्रोविजन आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा. ओके, तो आपने प्रोविजन पढ़ा BEAR Act से, फ्रॉम द BEAR Act. नाउ यू कैन रीड that provision from your study material, because study material में हमने as it is नहीं डाल रखा, study material में हमने उसको divide कर रखा है, ब्रेक कर रखा है, yes. further explain कर रखा है with examples. तो एक आपको layman language पता चल जाएगी from the BEAR Act, then you can read that portion, that provision from your study material. Okay, and study material आपको कितनी बारी पढ़ना है? minimum 2-3 times. तो जब आप BEAR Act पढ़ोगे, जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे और उसके बाद एट द एंड टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस गिवन है, आरटीपीज गिवन है, एमटीपीज गिवन है, और पास्ट ईयर के अगर आप ओल्ड स्कीम के सजेस्टेड आंसर्स देखना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. उससे आप कॉमन जो आपका पोर्शन है, यू कैन रीड दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सजेस्टेड आंसर. सो देयर इज अ plenty of so many questions available on the BoS website. Okay, तो जब आप इसको पढ़ोगे स्टडी मटेरियल को, आपने 1 महीने में एक बार स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लिया, फिर 15 डेज में वंस यू रिवाइज इट, देन सेकंड 15 डेज में यू रिवाइज इट अगेन, तो आपको ऑटोमेटिकली वो प्रोविजंस याद हो जाएंगे. बट BEAR Act इज अ मस्ट. BEAR Act से जितना आप पढ़ोगे दैट ऑल प्रोविजंस विल बी रिटेन इन योर माइंड एंड यू कैन इजीली राइट डाउन इन योर एग्जामिनेशन. जो बच्चे कह रहे हैं क्या हमें एज इट इज आंसर लिखना चाहिए, तो आपसे मैं यही कहूंगी जब आप जितनी बार पढ़ोगे द लॉ एज इट इज, तो क्या होता है ऑटोमेटिक इट्स गेट समवेयर सेव्ड ओवर हियर. यस, वो आपके यहाँ पे जाके सेव हो जाता है, बिकॉज योर माइंड एक्ट्स लाइक अ कैमरा. व्हाटएवर यू सी, व्हाटएवर यू लर्न, इट सिंपली गेट्स कैप्चर ओवर हियर. तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर उसको उस फॉर्म में आपको रिटेन करना है, तो यू नीड टू रिटेन, यू हैव टू रीड इट इन दैट मैनर ओनली, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल समवेयर to come up to that level. And dear friends, it is just like that. Any more queries? Yes. Miss Kirti is writing, are marks deducted when we don't write study material language? No, dear student, no marks will be deducted if you don't write the study material language. But जो language आप लिख रहे हो वो correct होनी चाहिए, जैसे अभी हमने explain किया. Correct होना चाहिए, और आपके जो legal requirements है, whatever the key essential elements of any legal provision, that should be there in your answer. Should not be that you are missing out some relevant and important information from your legal provision. That should not be there. So please keep a heed on this particular point. Miss Ankita is asking, ma'am, case study based question में there is 3 steps to cover answer: legal provision, right, facts of the cases and conclusion. So ma'am, my question is, sometimes I don't understand what content should be presented in fact of the case. It is similar like conclusion. नहीं, facts of the case में आप ये पूछ सकते हो कि what is given in the question. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट जो शॉर्ट में आप 1-2 लाइन में आप उसको फैक्ट्स को क्वेश्चन को बता सकते हो, देन यू कैन कोरिलेट. आपने थर्ड स्टेप इसमें नहीं लिखा, यू हैव सिंपली राइट लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन. कंक्लूजन से पहले आपको कोरिलेट करना है प्रोविजन को फैक्ट्स के साथ, क्योंकि आपको एनालाइज करना है ना कि उस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करोगे, तो दैट कोरिलेशन इज रिक्वायर्ड. प्रियांशु कालरा की, मैम, कैन बी राइट अवर ओन लैंग्वेज इन जीसी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. मिस्टर प्रांशु, वी हैव टेकन दिस क्वेरी, सो डोंट सेंड इट अगेन एंड अगेन प्लीज. Yes, Priyanshu Kalra, ma'am, is it compulsory to underline important points in answer? कर सकते हैं, you can do it up, but just read the examination instructions. वो आप कर लीजिए, but आप कर सकते हैं, तो just to bring highlight some important point over there, तो you can just underline it.
Ma'am, if I write wrong section number, but my provision is correct, then is it considered right or wrong solution? Dear student, it's depend on the examiner also, ki how he gives the marks to you, but it's requested to you for that if the provision is correct and if you are doubtful regarding the section number, so please don't write it. Okay, it may fetch your marks. It may. Miss Ankita, ma'am, is it right to highlight some important words in exam by pencil or pen? I think pencil आप is pencil कर लीजिए, it is more better, but otherwise read the instructions. Yes. Always be on the safer side. First read the instruction, then accordingly go with it. If any point we forget to write in the provision, will we get marks? Provision तो आपको अगर लिखना ही है, because जैसे क्या होता है आपके there are 4 sub parts, okay, and only sub part 2. I am taking one example. Sub part 2 is relevant to your question, so you have to write only sub part 2 of that question. ठीक है, तो वो जो सब पार्ट आप लिख रहे हो that should be correct. ये नहीं है कि आपने गलत लिख दिया और आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं, करेक्ट प्रोविजन के ही आपको मार्क्स मिलेंगे. यू शुड जस्टिफाई, जो भी आप अपनी रीजनिंग दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इट शुड बी इन ऑर्डर. ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे पूछा ए गया और आप जस्टिफिकेशन बी की दे रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी सर्विंग द पर्पस. सो दैट वाई द प्रॉपर एंड करेक्ट जस्टिफिकेशन शुड बी देयर. यस मैम, हाउ टू टैकल द फियर ऑफ लॉ? फियर ऑफ लॉ, वेरी गुड क्वेश्चन है. एक तो सबसे मुझे मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है भाई, ये वाला तो दैट्स व्हाई आई वाज साइलेंट. निशा विल आंसर दिस क्वेश्चन. लॉ का डर, लॉ का डर पहले बताओ आपको है क्यों? क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में यू आर नॉट कमिंग अक्रॉस विद एनी काइंड ऑफ द लीगल रिलेशंस? माय डियर फ्रेंड, इनएडवर्टेंटली और एडवेंचरली, नोइंगली और अननोइंगली, यू आर एंटरिंग इनटू नंबर ऑफ द एक्ट्स or the transactions or certain kind of the activities that is making you to enter into the legal relations, my dear friends. अरे भाई, आपकी मम्मी ने कहा जाओ बाजार जाओ बेटा सब्जी ले आओ, अगेन यू टेंड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. आपको आपके कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, आप बड़े ना तैयार हो के आप गए हैं इनको पिकअप करने इन द रेलवे स्टेशन, एंड देयर यू डोंट परचेज द प्लेटफॉर्म टिकट, माय डियर फ्रेंड, यू जस्ट एंटर इनटू द रेलवे स्टेशन, एंड व्हेन यू वर कमिंग विद योर रिलेटिव्स आउट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, you were being caught by the ticket checker. He said, where is your platform ticket, my dear? At that time you can't say I was not aware of, because there is a famous principle, ignorance juris non excused. That means ignorance of law is no excuse. That is what is being expected. At least you should have a knowledge of the certain compliances, certain basic, the legal requirement of conduct of doing any act. तो बेसिकली लॉ का जो फियर है, हाउ इट कैन बी रिड्यूस, वेरी सिंपल. आपको वो लॉ पता होना चाहिए. अब पता कैसे होगा? आपको जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन में जाते हैं, या व्हेन यू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ द एक्ट और द एक्टिविटीज इन योर डे टू डे लाइफ, योर ड्यूरिंग योर बिजनेस, योर प्रोफेशनल लाइफ, या एनी सॉर्ट ऑफ द थिंग्स, देन एट दैट टाइम यू नीड टू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यस, समथिंग शुड बी डन इन रिटर्न ऑफ दैट. अब ऐसा नहीं कि एक वन साइडेड कोई एक्ट करेंगे तो आप किसी के साथ लीगल एक रिलेशंस में जुड़ जाएंगे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल दैट वे. तो एटलीस्ट देयर शुड बी टू पार्टीज एंड सम एक्ट हैज बीन कंडक्टेड और सम काइंड ऑफ promises has been made with respect to providing of any goods or the services, or with respect to conduct of any promises. And definitely when you promise and you say that promise, non-fulfillment of that promise, if result in any kind of the loss to the person, then definitely somewhere you are entered or you have been abided by the legal relations. And that way you should have a common understanding कि yes, अगर मैं ऐसा act करूंगा तो somewhere I will be under a obligation. And of course, where there's a right, there's a duty, and where there's a duty, there is an obligation. So of course that there will be some sort of the remedies also to the provided to the person who is the sufferer. So it's a common and the layman's understanding कि yes, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. तो उस समय में आपको थोड़ा सा लॉ पढ़ना चाहिए. रीड इट लाइक अ स्टोरी, माय डियर फ्रेंड, रीड इट लाइक अ स्टोरी. आई एम टेलिंग यू, जब आप उसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, विद डे टू डे लाइव एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, नो बॉडी कैन मेक यू कि आप लॉ समझ नहीं सकते. यू विल बी इजिली अंडरस्टैंडिंग. आजकल तो इतने डे टू डे इंसिडेंट्स हो रहे हैं. व्हेनेवर यू सी द न्यूज़पेपर or whenever you see the news on the TV channels, you'll be finding the lot of the scandal, lot of the scam, lots of the different kind of the things are going on which are somewhere related or being governed or regulated or being controlled by certain acts. So that is why you should, whenever you heard any kind of these incident here during listening of the newspaper or the news, simply go and read about that thing in any of the article that is available. तो आप उसको relate कर पाएंगे कि अच्छा, if this could be conducted, this will be caught like this, and this is the wrong that has been committed.
So dhire dhire your interest will tend to develop. So reading is only the thing, and relating with the incident, of course, somewhere will make you understand the law, and dhire dhire you will develop the interest also. So reading is only the one thing that you should do it. Some students have raised their hand. Yes, Okay. yeah, let's take a queries. Miss Shreya Gujarati, you can unmute yourself and ask your query. Shreya, your hand is raised. Yes, ma'am. Yes, Shreya. Yes, Shreya. Ask your query. Ask, can we write provisions in our own Shreya, words? your voice is not audible. Kindly be louder. Hello, can you hear me? Yes, now. Ma'am, I want to ask, can we write provisions in our own words and explain the case scenario? Yes, we are explaining this question since last 15 minutes, that you can write in your own language the provision, but that language should have legal touch, and then you can explain the facts of the question. Okay, Shreya, got it? Okay, ma'am. Thank you. Then Meenaj, you kindly raise, you can unmute Hello, ma'am. yourself. Yes. Am I audible? Yes. Ma'am, is it mandatory to follow the given format for answering each question, irrespective of the marks allocated? Which we have given, which we have explained you right now? Yes, the format you explained right now. Dear student, there is no format compulsory. We are just guiding you that you can present your answer in this format, but it's up to you. For the format, you can see the last suggested answers, RTPs, questions given at the test your knowledge. So you will get an idea that how the answers are presented. Okay, this is a simply format we have given. And Minal, Okay. one more thing is that the answer should be come out in a complete sense. Means something should not be missed out. So it can be any of the ways, either following these steps or simply you can start your answer directly with the legal issues also. Okay, yes, this is the given scenario in the case Ajit. study, and then you are coming across with the relevant provisions, and then you're analyzing that situation and then concluding your answer. So it can be any of the steps, but yes, complete as a whole, the answer should be there. Got it, Minaj? Okay, thank you, ma'am. Thank It's you, ma'am. okay, yeah. Yes. Miss Ankita Sharma, you have already also raised your hand. You can ask your query. Hello, ma'am. Yes, hello. Ma'am, am I audible? Yes. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ बिकॉज मैं जब फाउंडेशन में थी तो आप दोनों की गाइडेंस से ही मैं उसे बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाई. Thank you so much. मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो एमसीक्यूज होते हैं मैम, जैसे उनकी लैंग्वेज मुझे काफी ट्रिकी लगती है, सो दैट जब मैं उसे अटेम्प्ट करती हूँ तो मुझे लगता है इसका आंसर ठीक होगा, बट जब मैं उसको चेक करती हूँ तो वो अलग ही होता है. तो मैम एमसीक्यू से डील करने की बेस्ट टेक्निक? सॉरी. हाँ अंकिता, इस बात पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज बनाया इस तरह से जाता है कि आपको चेक कर सके कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका सब्जेक्ट पे होल्ड कितना है. एक्चुअली क्या होता है, जो ऑप्शंस भी होते हैं दे आर वेरी नियर, और उन्हें पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली दे फ्रेम द डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ द ऑप्शन इन द एमसीक्यूज. तो अंकिता, इसके लिए सबसे पहला ये है कि आप जब भी लॉ पढ़ते हैं you should have a clarity what exactly the law is saying about and what is requiring and how it's going about. So आपको ये पता होना चाहिए. और जब आप केस स्टडी पढ़ते हैं या केस सिनेरियोस पढ़ते हैं तो उस स्टेज में क्या है कि आप फैक्ट्स को अच्छे से रीड करिए, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है पैराग्राफ 2 में और कोई फैक्ट्स ऐसा है जो पैराग्राफ 1 में है, वो उसको इफेक्ट करता है, तो देन इन दैट केस डेफिनेटली योर आंसर विल बी डिफर्ड. और ये बनाने वाले को भी ज्ञात है इस चीज का, इसको पता होता है कि बच्चा है ना फर्स्ट पैराग्राफ को कहीं ना कहीं he may skip, and that is why only referring to paragraph number 2 he will be giving the reply. So that is why in order to check the understanding, read the complete case study in entirety and relate it. I already told you that law is related to one or the other, legal provision within itself. So you need to have the understanding of the law in its entirety. So that is why read the complete law in itself, plus read the case study as a whole, and then give the answer. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और लॉ आपको अगर अच्छे से पता है अंकिता, यू कैन डू इट. मैम वन मोर क्वेश्चन. मैम जो हमारी मतलब कोचिंग
जो हम जिनसे कोचिंग लेते हैं मैम, वो जब भी आईएफएससी या निधि कंपनीज के बारे में कुछ आता है तो वो डायरेक्ट कहते हैं कोई नहीं, इसको आप कट कर दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैम मेरा क्वेश्चन था कि आईएफएससी और निधि कंपनी को भी इक्वली प्रायोरिटी देनी है जितनी हम बाकी कंपनीज को देखकर चलते हैं। आईएफएससी के केस में हो जाता है कि ना, देखो आप यहाँ पे थोड़ा स्किप कर सकते हो, वो स्पेशल कंडीशंस के लिए होती है, स्पेशल जोन्स के लिए होती है, तो वहां पे आपके नॉर्मल कंपनीज एक्ट के क्लॉजेस नहीं लगते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड कि यू कैन स्किप ओवर देयर। बट यस, विद रिस्पेक्ट टू निधि कंपनी, निधि अगर देखा जाए तो निधि आपका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अंडर द कंपनीज एक्ट, सो यू कांट स्किप, बट यस, you can't skip, but at certain level you will see that nidis has been as a whole covered at the SETI. But however, if certain section is there on it which is something is given with respect to the निधि कंपनी, तो स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई केस पूछा जाए और वहां पे वो निधि कंपनी है, तो मे बी पॉसिबल दैट एग्जेम्पशन विल बी फॉलिंग अंडर दैट पार्ट। तो इसलिए आप निधि कंपनी को स्किप मत करिएगा। वॉट एवर एग्जेम्पशन और प्रोविजंस हैज बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू द निधि कंपनी, अंकिता काइंडली रीड इट, because there's a separate thing regulating for it. Some variation is there with the normal, the legal provision whatever is given for the rest of the companies. So please don't ignore that way. Please do it. Thank you so much, ma'am. Okay. Miss Priyanshu Kalra, you can unmute yourself. Yes, Priyanshu. गुड आफ्टरनून मैम टू बोथ ऑफ यू। Good afternoon. मैम मेरे 2-3 डाउट्स थे। हाँ, पूछिए। मैम मैंने तो पहले ये पूछना है कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या सारी केस स्टडी बेस आएंगे? Both types of questions. It will be a mixture of direct questions also and case study based questions. ओके। एंड मैम जैसे हर चैप्टर में पेनल्टीज हैं, तो वो पेनल्टीज याद नहीं हो रही, मतलब मिक्स हो जाती है, या फिर अगर एक चैप्टर की याद होती है दूसरी करते हैं पिछली भूल जाते हैं, तो वो बहुत दिक्कत हो रही है। पेनल्टीज याद करें या रहने दें? प्रियांशु, अब फिर मैं आपसे ये कहूंगी, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे तो हर एक प्रोविजन के साथ पेनल्टीज है, एंड आई डू अंडरस्टैंड योर कंसर्न ऑल्सो कि जस्ट रिमेम्बरिंग ऑल द पेनल्टीज इज नॉट पॉसिबल। यस लेकिन मैम। कुछ अगर स्पेसिफिक ऑफेंसेज, अगर आप फ्रॉड का केस है कहीं पे तो उसकी पेनल्टीज याद कर लीजिए। कुछ स्पेसिफिक केस है, जैसे अगर आपका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है तो उसकी पेनल्टीज, फेलियर है अगर डिविडेंड डिक्लेयर में तो उसकी पेनल्टीज याद कर लीजिए। बट आई ओके डू ओके अंडरस्टैंड योर कंसर्न, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फ्रेम अ टेबल। टेबल में आप किसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की कुछ की पेनल्टीज याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपसे ऑल ऑफ सडन किसी की भी पेनल्टी पूछ ले, देयर प्रोबेबिलिटी इज लेस। इफ दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट द you can say about the penalty based any question, so it will be related to the important or the prominent sections, so that way you can prepare a table with respect to the main sections and their penalties. ओके मैम। एंड मैम जैसे पेपर में जैसे काफी सारी प्रोविजंस में फॉर्म्स हैं, तो आंसर में हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, अगर फॉर्म का नाम याद ना हो, वो भी बहुत सारे हैं तो दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, You can write. हाँ बिल्कुल, यू कैन की ऑन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी आप रूल्स का रेफरेंस दे या चैप्टर के नाम का रेफरेंस दे, आप वो करके भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी ओके एट इंटरमीडिएट लेवल दो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू मे बी राइटिंग द फॉर्म नेम एंड नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स, बट यस, आपकी स्टडी में है तो आप कोशिश करिएगा कि उसको आप पढ़ें जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। बट यस, ठीक है, नहीं याद होता तो यू कैन मेंशन सिंपली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जैसे सेक्शंस के लिए हमें बस, करना है एज हाँ, पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो यू कैन हाँ जी हाँ जी। राइट हियर आल्सो. ओके ठीक है, मैम। हाँ। एंड मैम जैसे डेज लिखने होते हैं, जैसे 21 डेज है, तो बुक में जैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में TWENTY, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 21? यस, वो 21 आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो और यू कैन नंबर्स में भी लिख सकते हो. ओके मैम। एंड मैम ओके, जैसे कुछ प्रोविजंस हैं NFRA की और CSR की, तो मैम ये बहुत ज्यादा है, तो फिर इसमें कैसे करें? फिर देखो NFRA तो बहुत सीएसआर ही के लिए तो ज्यादा मैं है। आपको कहूंगी कि आपका ना वो रेफरेंसर, आपका कैप्सूल आया हुआ है, अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे यस अवेलेबल है, मैम। या इवन आपका जो सारांश है, यू बी फाइंडिंग सारांश। दैट वी हैव कम आउट इन द क्रिस्प मैनर दीज इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू सीएसआर. So I suppose that, dear student, that you should go and get that thing also with you while studying, while refer that particular thing also, because it is made for you students. वो भी वो आपका देखा जाए तो डायग्रामेटिक फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड मैनर में है, आपको मेन जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, सिर्फ की टर्म्स को हमने कवर करके उसको बनाया हुआ है फॉर इजी रिमेम्बरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो दैट यू कैन गो विद इट. ओके मैम प्रियांशु. NFRA में भी मैम ऐसे ही कर लें? नफरा में भी आप कर सकते कर हैं. मैंने सकते आपको क्या बताया, अगर आपको लॉ को रिटेन करना है, पढ़ना है, उसको ब्रेक करिए, उसको स्मॉल पैरास बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए, और जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए हर एक चीज का नहीं, लेकिन आपको लगता है कि हाँ, फर्स्ट अगर स्टेप में ये है कि भाई आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो आप लिखेंगे यस एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड.
कौन फाइल करेगा, देन राइटेड बाय दिस पर्सन, टू यस whom it मैम। can be filed, then write that. तो इस तरह से कनेक्ट करके बनाइए, किसी प्रोविजन को ब्रेक करके, तो आप उसको इजिली रिटेन भी कर सकते हैं, इट विल सफाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल प्रोविजन ऑल्सो। ओके मैम। ये एंड मैम एक नोट्स लास्ट आपके क्वेश्चन था। एलवीसी जब आप देखते हो तो नोट्स वहां पे भी अवेलेबल होते हैं, बीओएस मोबाइल एंड बीओएस नॉलेज पोर्टल में, तो यू कैन रेफर दोज नोट्स ऑल्सो। मे बी वहां पे थोड़ा सा और इजी एक्सप्लेनेशन कर रखी हो, तो आप नोट्स को भी हैंड बाय हैंड उसको रेफर कर सकते हो। मैम जो क्लासेस होती है वहां पर कह रहे हो? यस यस, एलवीसी। एलवीसी की क्लासेस जो होती है, देयर द एक्सपर्ट फैकल्टी शेयर देयर नोट्स ऑल्सो, so that ओके will ओके also be a very helpफुल to you while reading of the subject. ओके ओके। एंड मैम एक लास्ट क्वेश्चन था। Yes, जैसे आपने आंसर राइटिंग में एक हेडिंग लिखवाई थी कोरिलेशन की, वहां पे एनालिसिस वर्ड लिख सकते हैं? मैं एनालिसिस लिखता हूँ बिल्कुल जैसे। बिल्कुल, कोरिलेशन मतलब वही है कि आप फैक्ट के साथ उसको एनालाइज कर रहे हैं ना उस सिचुएशन को, देन यू आर कमिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द रेलिवेंट लॉ ओवर देयर, so you can do it at that part also. ओके। एंड मैम जो कंक्लूजन लिखते हैं उसमें मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूँ, बेस्ड ऑन द above provisions we may conclude that such officer is punishable since, एक लाइन का रीजन दे देता हूँ, बस बस इतना ही करता हूँ, ठीक है ना ये? यस एब्सोल्युटली फाइन। चलेगा अभिषेक, नॉट एन इशू। प्रियांशु। ओ ठीक प्रियांशु, है मैम। यस। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। नाउ कृतिका तिवारी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन था कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के लेकर। बताइए। मैम जैसे ये चैप्टर जो है हमारे स्टडी मैथ में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने इसके जब फाइनल के क्वेश्चंस देखे थे, उसके अंदर ना मैम एक चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि अगर वो कंपनी आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड है और वो जो है इंडिया के अंदर एजेंट से काम करवाती है, प्लस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन में तो उसे फॉरेन कंपनी माना गया है, कुछ में उसे फॉरेन कंपनी नहीं माना गया है। तो मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन एक फ्रेम होके आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए? देखो, मुझे तो बस ये लगता है कि आपकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, फॉरेन कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है एट दैट टाइम, व्हाट द थिंग इज बीइंग रिक्वायर्ड। व्हाट इज द नेम? कृतिका। कृतिका। हाँ कृतिका, एट दैट टाइम व्हाट द थिंग इज रिक्वायर्ड बच्चे, एट दैट टाइम यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन फॉरेन कंपनी का क्या कहता है, वहां पे आपको अगर सही से ये बोला हुआ है कि भाई आपकी ये रिक्वायरमेंट है, इन ऑर्डर टू बी कंसिडर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए या थ्रू इट्स एजेंसी और द ब्रांच, अगर ये सब चीजें अगर उसमें रिक्वायरमेंट में दी हुई हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन से कि यस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। सो आप ये देखिएगा कि आप rather than considering any of the past thing or any of the recent thing, you go with what the provision says and then you give your answer in line with that, क्योंकि प्रोविजन के हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। प्रोविजन में अगर वो चीज मेंशन है देन यू शुड गिव अकॉर्डिंगली, एंड इफ इट इज नॉट बीइंग कवर्ड देन इट विल नॉट बी दैट वे, सो गो विद अकॉर्डिंगली दैट। ओके मैम, यस, थैंक यू। ओजस्वनी शर्मा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरी क्वेरी थी कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैम क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव है या वो मैम एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन है मैम? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका लिखा होगा कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू दिस या डिफरेंशिएट बिटवीन एलएलपी एंड द कंपनीज। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज या हाउ द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए होंगे और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो जो छोटे छोटे फैक्ट्स दे रखे हैं और उसके रिक्वायरमेंट पे सम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, दैट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, एंड विच 2-3 लाइन्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, दैट इज डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसमें आपको क्या होता है, आपको कोई है ना कोई सिनेरियो नहीं होता, आपको सीधा प्रोविजन देना है। मतलब वहां पे आपसे ऐसे पूछ लिया, मान लो सपोज आपको पूछ लिया व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट, this is a direct nature of the question. Suppose if they ask you ki who's designated director or a designated partner, sorry, who's a designated partner under the LLP Act, so that will be considered as a direct nature question. लेकिन अगर वही पूछ लिया उसमें टेस्टिंग करके कि उसके अंदर 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया है, वो बाहर इतने समय तक रहा, तो बताओ तो क्या उसको है ना हम उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर मानेंगे या नहीं मानेंगे? So that can be if a situation is there and then in that situation you are applying the law, so that will be a case scenario based, application based, analytical based. So that direct होता है, वहां आपको ऐसे situations नहीं होते, सीधा आपको provision देके अपना direct answer देना है। ठीक है, got it? यस मैम। मैम एक सेकंड क्वेश्चन था मैम, जैसे कि मैम डायग्राम्स और कंपलसरी होते हैं जब भी हम एग्जाम में लिखते हैं?
नहीं, डायग्राम्स आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल में पढ़ने के लिए दिए हैं, बट आपको अपना आंसर डायग्राम फॉर्म में या फ्लो चार्ट में प्रेजेंट नहीं करना। बस एक ही कंडीशन है, जब आपका टाइम नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उस समय आप Yes. दे दीजिएगा, बट Okay. अवॉइड इट। Avoid it. मैम लास्ट क्वेश्चन मैम इस मैम एक चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, इसमें मैम कुछ जर्मन और कुछ मैम फ्रेंच वर्ड्स है, क्या मैम इसको एग्जाम में हम लिख सकते हैं क्या? देखो बेटा, वो उस वर्ड्स को याद करना, उसकी स्पेलिंग याद करने की श्योरिटी आप ले लेना। इफ यू आर एबल टू रिटेन दैट Yes. थिंग देन यस, एंड इट इज गुड थिंग, बिकॉज लॉ में आपको काफी लैटिन टर्मिनोलॉजी, काफी ग्रीक वर्ड्स, आपको रोमन टर्मिनोलॉजी, ये सब चीजें मिलती हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट, एंड यू नो समटाइम्स स्पेलिंग इज ऑल्सो टिपिकल, सो दैट वे इफ यू आर एबल टू रिटेन एंड राइट इट वेल एंड गुड, अदरवाइज you can skip that part. ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay. Please mute yourself, Ojaswini. We can take some queries from the portal also. Yeah. मैम पेनल्टीज याद नहीं होती, ये हमने प्रियांशु का ऑनलाइन ले लिया है। हाउ शुड वी प्रेजेंट द डिफरेंस दैट इज इन टेबुलर फॉर्मेट और इन पैराग्राफ्स और इन पॉइंट्स? डियर स्टूडेंट, इट्स अप टू यू दैट यू कैन प्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्मेट और इन द डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन differentiate. Miss Aratika, shall we make our notes in law or only refer modules and saransh? Dear student, it's up to you. The study material, saransh, and the PPT is available on the BoS mobile app through the LVC lectures. They are available, but if, making notes is a very good task. So if you have time now, because only two months are left for your exams. So if there is a time, you can prepare the notes or you can refer from the study material. It's up to you. और नोट्स बनाना इसलिए जरूरी होता है, बेसिकली वी टेंड टू से आस्क स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर नोट्स, दिस इज जस्ट बिकॉज व्हाइल राइटिंग आप उस चीज को पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, यस, तो आपका उस पर होल्ड अच्छा हो जाता है। तो जनरली प्रिपरेशन ऑफ नोट इज प्रिफरेबल, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यस, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट यू कैन मेक नोट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. So what will happen in the last moment, at the last 11 hour, it will save your time in reading and revising the concept. एंड यू विल इजिली रिकॉल एवरीथिंग, क्योंकि आप उसको आपने वापस से पढ़ा, क्योंकि जो आप लिखते हो ना और जो पढ़ते हो लिख लिख के, वो ज्यादा समय तक आपकी मेमोरी में रहता है। For solving practical problems in law paper, should we write provisions also? Yes, legal provision is a must. Miss Atanu, you can unmute yourself. यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। Good गुड afternoon. आफ्टरनून। मैम हैंडराइटिंग मैटर करता है आंसर प्रेजेंट में? Yes. बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत हैंडराइटिंग, मैंने क्या कहा था, एक लाइन मैंने यूज करी थी, Legible. लेजिबल। लेजिबल मीन्स जो पढ़ने योग्य, जो इसको इजिली से पढ़ा जा सके। तो काइंडली जस्ट फोकस ऑन द राइटिंग पार्ट ऑल्सो, दैट इट शुड बी लेजिबल, आपका वो थोड़ा क्लियर हो, बहुत ज्यादा आपका कटपट ना आपने नहीं लगाया हो अपनी आंसर शीट में, तो डेफिनेटली इट गिव्स अ इम्प्रेशन, good impression. यस। तो ट्राई टू मेक दैट योर हैंडराइटिंग शुड बी क्लियर, तो उस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके मैम। और एक मैम सर, मैम ग्रामेटिकल मिस्टेक जो हो जाता है, मतलब आप अपने ओन लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो वो मैटर करता है? नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट जो लीगल जो चीजें हैं, हम बार बार उसी पे इम्फेसाइज कर रहे हैं कि लीगल चीजें आपकी सही होनी चाहिए, बाकी ग्रामेटिकल जो चीजें हैं वो इतनी मैटर नहीं करती। बट यस, आप ज्यादा ब्लंडर्स भी मत कीजिएगा। ओके 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 मैम। ग्रामेटिकल में ऐसा नहीं हो कि अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, बस यस, ये आप देख लीजिएगा। मतलब हैच के जगह हैप चलेगा ऐसे? क्या चीज, फिर क्या? से कहिए। मतलब हैच हैच के जगह हैप चलेगा ऐसे? अच्छा, हाँ, वो 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 चलेगा। चल जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। नेहा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एग्जाम में हम एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि MOA, लाइक व्हाट एग्जांपल यू हैव गिवन? ROC, ROC, Yes. हाँ, like बिल्कुल ROC, बिल्कुल। AGM, EOGM, बट आप फर्स्ट टाइम एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि AGM की फुल फॉर्म आपने बता दी, एनुअल जनरल मीटिंग, एंड ब्रैकेट में लिख दिया AGM, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ब्रैकेट में लिख दिया ROC, उसके बाद यू कैन यूज द एब्रिविएशंस। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। प्रियांशु, अगेन यू हैव सम क्वेरी? यस मैम, यस यस। मैम। हम जैसे फैकल्टीज कहती हैं कि जैसे आपने पहले प्रोविजन लिखी, फिर जब आपने पॉइंट्स बनाने हैं तो 1 2 3 नहीं लिखना चाहिए,
तो मैम हम एरोज या फिर डॉट्स या फिर से कुछ कुछ भी यूज अलग कर सिंबल। सकते हैं, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट शुड बी बस डिफरेंट बुलेट्स पॉइंट्स में होना चाहिए, डिफरेंट पैरास में छोटे छोटे आपके उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो इट हार्डली मैटर्स वेदर इट मे बी 1 2 3 4 और सम सॉर्ट ऑफ ABCD और किसी भी और अन्य तरीके से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड मैम हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कैन, मे, शुड, वुड, कुड। ये नहीं, किस चीज के लिए थोड़ा सा मैम बताएंगे? जैसे हम जैसे अगर लाइन है जैसे कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड, तो हम ऐसे लिख सकते कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड। हाँ हाँ, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन। Supreet, you can unmute yourself. गुड आफ्टरनून मैम। Good गुड afternoon. आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन था कि इज इट मैंडेटरी कि हमें रूल्स नंबर और क्लॉज नंबर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लगानी है? रूल्स नंबर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, रूल्स के लिए हम एम्फेसाइज भी नहीं करते, बट सेक्शन नंबर्स के लिए वी एम्फेसाइज कि यू डू राइट योर सेक्शन नंबर्स इन योर आंसर्स, बट वही कोटिंग अगर आपको नहीं याद, सेक्शन नहीं याद, तो यू कैन स्किप इट। मैम जैसे एक सेक्शन में फर्दर उसके रूल्स है, तो अगर हम रूल्स नंबर नहीं लिखते, उसका सिर्फ सेक्शन नंबर लिख देते, सो इज इट ओके? यस, चलेगा। और चलेगा। दूसरी चीज ये भी है, द थिंग इज दैट सुरप्रीत, कोशिश यस मैम। वैसे हमें यही करनी है, मेरे लगता है सेक्शन मेन सेक्शन के लिए ठीक है, अगर नहीं आता आप छोड़ ओके दे। इसी मैम। तरह रूल्स के लिए भी अगर आपको रूल्स नंबर नहीं पता है, डोंट राइट इट, बट रूल्स का नेम अगर आप लिख नेम, देंगे, एंड नेम या इज मैम। सेम बेस्ड ऑन द चैप्टर नेम, यस। ओके मैम। तो वो आप कर सकते हैं साथ में। और यू कैन राइट द रिस्पेक्टिव रूल्स ऑफ द सेट चैप्टर, अगर आपको वो भी नहीं पता है। वैसे तो बहुत ईजी है, अगर आपको चैप्टर का नाम यस पता है मैम। देन यू कैन हाँ जी। राइट द रूल्स ऑल्सो। बट if ओके suppose मैम। that is also not being written by you, are not able to recall at that moment, simply by the respective rules करके आप उसको कर सकती हैं, ठीक है। पर कभी भी गलत मत लिखिएगा, ठीक है। या श्योर। यस मैम, एक चीज और, मैम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करना चाहिए, बिकॉज वो काफी हद तक तो अमेंडमेंट्स हो चुकी है, न्यू स्कीम में भी चेंज आ चुका है, देखो, तो आप पास्ट ज्यादा पेपर्स गो पुराने थ्रू पास करिए। पेपर्स पे भी मत जाइए सुरप्रीत, ओनली आई कैन रिकमेंड, बहुत पुराने 23, पेपर 22 आप मैक्सिमम। रिसेंट 1 2 अटेम्प्ट्स के देख सकते हैं, वो भी जो आपके ओके कॉमन मैम। टॉपिक्स हैं उस पे। बाकी रेस्ट इट इज बेटर टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द मेनी चेंजेस एंड अमेंडमेंट। ये यस रिसर्च मैम। हाँ, ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी कि व्हाट आर द कॉमन टॉपिक्स इन द न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम। ओके, तो यू कैन रेफर द पास्ट ईयर, बट मैक्सिमम 2-3 अटेम्प्ट्स। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Okay. Anant Shane, you can unmute yourself. The full name is not coming here. Yes. Good afternoon, ma'am. My Good name is afternoon. Anant. Is it compulsory to refer the previous RTPs like revision test papers because they are not available on the BoS knowledge portal? So, is it like November 23 RTPs should be refer or past 2 attempts RTPs should be refer, ma'am? Anant, my only request is, since your syllabus is changed and since due to certain amendments also time to time which are coming the respective papers and the subjects, so it is better to refer the latest one only. We always prefer our students to say to refer the latest publication. Okay, so May 24 it's enough, no, ma'am? May Yeah, 24 yeah, RTP. that is just for your reference. Ki yes, in this form the question will come and you just revise and test yourself ki whatever you have studied so far, are you able to do or attempt the paper, or you can solve the questions whatever given over there. So that is for the revision, for a revision test paper, as the name reveals, just for the revision part. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Miss Neha Gupta, you can unmute yourself. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम मुझे पूछना था कि जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, तो उसकी हमें सॉल्यूशन भी करके दिखानी होगी या जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर केवल टिक भी कर दे? Only OMR शीट में आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। फुली जो आप भरते हो ना OMR शीट, वो भरनी है। रीजनिंग आपकी, आप नोट्स अपने आंसर शीट पे अपने उसके लिए पर्पस के लिए कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। बट हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चाहिए, ABCD में से एक ऑप्शन होना चाहिए, नो रीजनिंग एंड नो दिस कैलकुलेशन पार्ट। ओके मैम, थैंक यू। Abhinaya, you can unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. My question is this: is it necessary to answer the questions in a paragraph manner? Dear students, it is not everything we are teaching you. It's not mandatory. We are just
guiding you. Okay, like the previous student I was asking, it's mandatory to refer the RTP. It's not mandatory. It's only for you. Okay, regarding the answers presentation, you can divide your answer in different paragraphs, different bullets, but it is not mandatory. It's not mandatory, but Yes. just for sake of making it more presentable. Yes, for presentation. Yes. So that is the Okay. way of the presentation only. Okay, ma'am. Ma'am, also I want to clarify that we don't have to by heart the provisions, but we have to mention the legal terms is necessary, right? Yes. Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Okay. Miss Komal, you can unmute yourself. हाय मैम, Hi. मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब आंसर करते किसी क्वेश्चन का, उसमें मैंने जब सेक्शन लिख दिया वहां पे और उसका आंसर सही है पर सेक्शन गलत हो गया कभी गलती से, तो क्या मेरा आंसर में मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे वहां? आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, आपको नंबर भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपने लीगल प्रोविजन सही लिखा है, तो इट्स अप टू द एग्जामिनर. ही कैन डिडक्ट द मार्क्स ऑल्सो, ही कैन गिव द मार्क्स ऑल्सो. तो बेटर है कि हम आंसर या सेक्शन नंबर गलत ना लिखें. Okay? मतलब क्या मैंने प्रोविजन सही लिखे, सारी प्रोविजन वगैरह सही लिखी है? मेरे ख्याल से आप ये कह रहे ओनली हो सेक्शन, मेरे हिसाब से हाँ ओनली सेक्शन गलत हो गए हैं. हाँ नहीं, आप शायद ये कह रहे हो कि यू आर नॉट रिटन द राइट प्रोविजन बट कंक्लूजन इज करेक्ट. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? हाँ राइट, सेक्शन ओनली सेक्शन गलत हो गया है. हाँ, बाकी तो सब देखो सही है. जैसा भी हमने क्या पहले मुझे आपको मार्क्स बताया, मिलेंगे? हाँ पहले आपको बताया है कि भाई आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है. तो इफ यू हैव रिटन द करेक्ट कंक्लूजन, बट देखो लेकिन जो आपने कंक्लूजन आपने दिया करेक्ट है, लेकिन आपका जो रीजनिंग है देखो उसमें आपको कंक्लूजन का ये कि आपको मतलब बिल्कुल ही ऑल टुगेदर आपको ऐसा नहीं है कि 0 देंगे. दे विल गिव यू सर्टेन नंबर वॉट एवर दे हैव अलॉटेड फॉर द कंक्लूजन. बट यस, when it is properly supported with right reasoning, तो of course there is a difference. तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, but you should try to lay down the correct answer. But yes, whatever the marks will be assigned to the conclusion, if the conclusion is correct, then definitely that much marks will be allotted. Okay ma'am, thank you. Yeah. Jay Stuti, you can unmute yourself. Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Ma'am, whether it is when we'll be getting out of syllabus question in exams, ma'am? No, ऐसा नहीं होता है. आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. So we should take by referring question papers, we'll be taking only which is related to the study material, no, ma'am? Yes, you should take the base of study material. Because study material defines the coverage, dear students. Yes. So go with the study material, because how much you have to read, that is being defined under the this your study map. So go with the study map. Yes, ma'am. Because negotiable instrument act and this one contract act. Another yes, ma'am. It has been taken, no, ma'am. It will be in previous year question. We shouldn't. मैंने आपको अभी बोला कि आपको ये रिसर्च अपने आप करनी पड़ेगी कि what is common topics between new scheme and old scheme. And you are right, contract act negotiable has been deleted from the intermediate. Okay, thank you. Okay. Mr. Shivam is asking, ma'am, in MCQ, there will be negative marking. No, dear student, there is no negative marking at the intermediate level for MCQs. How to learn law and right? We have explained in a very beautiful manner, I suppose, that how to learn law and how to write also. We have explained to you the presentation of answers. Miss Ashlisha, ma'am, show my message or not? Dear student, Miss, you just please send it again. Ajit. Mr. Bundy, in situation of repetitive words in answers, are we use abbreviations in question and give full form at the end? No, at the beginning of the answer, you can use the full form along with the abbreviation, then you can use the abbreviations. Please reply my doubt, Miss Ashilisha. Your message is not visible to us. मैम प्रैक्टिस के लिए कौन सा मटेरियल यूज करें? प्रैक्टिस के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल में so many questions are available at the end of every chapter. You can refer the RTP, latest RTP. You can refer the MTP1 which is uploaded, and MTP2 will come in April. And as well as you can practice the MCQ dashboard. Okay. And also
there is a assessment in the LVC. Whenever the faculty is teaching, they ask you some questions. So you can see the recorded lectures of LVC and you can refer the PPT also. Miss Priya, ma'am, how to write answers for general clauses as well as interpretation of statutes? This question we have taken so many times. Shall we write a conclusion in 1-2 line? Yes, you can write your conclusion in 1 or 2 lines. मैम सेशन को ज्वाइन कैसे करें? सेशन को ज्वाइन करने के लिए BoS मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पे पुश नोटिफिकेशन आया होगा बिफोर 5 minutes of the, I think at around 1:55, so you can join through that link. Miss, this, how to do answer new questions not framed in past exam. What to do question if question paper is prepared from an unpredicted area. MCQ, what is similar answer option is given. Unpredicted area क्वेश्चन पेपर, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा वो आपके स्टडी मटेरियल बेस्ड प्रोविजंस पे ही बनेगा. अनप्रेडिक्टेड कुछ नहीं होता एग्जामिनेशन में, सब कुछ आपके स्टडी मटेरियल के कवरेज के बेसिस पे ही बनाया जाता है. एंड रिगार्डिंग MCQ, इफ सिमिलर आंसर ऑप्शन इज गिवन, सिमिलर आंसर नहीं होगा, क्लोज्ड ऑप्शंस होंगे आपके. ऐसा नहीं हो सकता A and B आर बिल्कुल आर एब्सोल्युटली सेम. सिमिलर भी नहीं हो सकते, सिमिलर इन द सेंस सम कुछ देयर विल बी अ डिफरेंस, दे विल बी क्लोज्ड. तो आपको उन चारों में से अपना करेक्ट ऑप्शन देखना है. Shall we also learn the footnotes given at the end of page in modules? You can read the modules footnote and you can learn also. I think relating to IFSC companies, their footnotes are given. Footnote इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि it gives you Extra information. Extra information and something related to whatever is covered in your study mat at the main page. तो in fact sometimes this is also being required कि कुछ चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए उसका अमेंडमेंट कब आया, कौन सी डेट की नोटिफिकेशन से आया, कब से इफेक्टिव है, या सपोज समथिंग इज डिलीटेड और ओमिटेड, समटाइम इट इज गिवन अंडर द फुटनोट आल्सो. सो दैट वे it is expected that you should know these information also with related to the any legal provision given or forming the part of the main content. So you should read it. Yes. Miss Ashil Isha, मैम ICAI BoS पर केस सिनेरियो मिल जाएंगे. ये आपका MCQ डैशबोर्ड पे आपको कुछ MCQs और कुछ केस सिनेरियोज मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट RTP, MTP एंड उस पे आपको ये केस सिनेरियोज और MCQs का क्वेश्चन बैंक आपका अच्छा इकट्ठा हो जाएगा. और प्रैक्टिस करिएगा उनमें से तो बिल्कुल. और इन द वेरी सेम मोमेंट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी ऑफ द MCQs ऑन द MCQ डैशबोर्ड, तो यू बी गेटिंग द रिजल्ट आल्सो साइमल्टेनियसली. सो यू कैन एनालाइज एंड असेस योरसेल्फ इन फैक्ट कि यस मेरा प्रिपरेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. Rohan Kumar, ma'am, how to tackle small points in questions like contents of director responsibility statement? These are not memorable for me in non language. पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आई ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है या किसका क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स में भी अकाउंट्स में भी है. यस हाँ, इन सेक्शन 134. तो उसके अंदर अगर आप यस यू आर राइट देयर इज देयर, तो आपको देखो उसको पढ़ने के लिए तो आपको की टर्म्स को उसमें से चुनना पड़ेगा सबसे पहले. तो की आप जब उसमें से की टर्म्स आप चुनेंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं ना हमने अपने स्टडी मेट में एक डायग्राम भी दिया हुआ है. इफ यू सी अवर दिस रिसेंट कैप्सूल आल्सो, so you will be finding that already we have given a short diagram on this director responsibility statement. So there it will help you actually कि आपको उसमें मेन की टर्म्स क्या 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 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पे वो लोग देते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, उसको एज एन बीइंग एन अकाउंटेबल और बीइंग ए ट्रांसपेरेंट, तो वो दिखाते हैं कि हमने हाँ ये काम किया, ये हमने ये चीजें दी. तो वट एवर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो यू हैव टू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट द थिंग्स. वो आपको उसमें से ट्रेस करके फिर लिखना पड़ेगा. नहीं तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने आपको सोर्सेज बताया, यू कैन रेफर द सोर्सेज एंड यू कैन इजिली रिटेन द इम्पोर्टेंट थिंग्स पर्टेनिंग टू दिस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. Yes, Mr. Hardik, how to read the BEAR Act in browser? Please show in screen. If we search in online, then we find lot of site, but which platform is trustable and true? Please give some guidance and step to how to read in MCA portal. देखो ये एक्ट की अगर आप बात करें तो आप इंडिया कोड देख सकते हैं विच इज रिलायबल. ठीक है, MCA की वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, वहां पे भी आपको वेरियस रेलेवेंट, वी कैन इवन शो यू दैट पार्ट आल्सो. तो यू कैन गो टू द MCA वेबसाइट. MCA वेबसाइट पे आपको काफी सारे आपके रिलेटेड लॉज मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं. ठीक है, इसके अगर आप देखेंगे. Dear students, please mute yourself. We'll ask after 2 minutes. Thank you. तो आप उसमें MCA में जाएंगे तो यू आर हैविंग द कंपनीज एक्ट ओवर देयर, द पार्टनरशिप एक्ट, इवन इफ यू बी फाइंडिंग ओवर देयर
You know that other like LLP, even you can go over there. Like this हाँ, companies that is yes. there, you can write, just click on any of the section, incorporation of companies, like prospectus. This is an ebook Yes, basically. ebook. ये आपकी ebook है, तो you can go over there, you can see. So these are the authentic resources from where you can have the bare act. आप LLP पे जाके देख सकते हैं. You can go to the competition act का भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आपको partnership का मिल जाएगा. Then you will find like IBBI का, उसका IBC का भी मिलेगा, but it will be linked again to with the IBC main website. तो आप इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं. Yes. Mr. Rohit Mali, is it necessary to quote case studies? E-form. Case studies, I think he's asking about case laws. Dear student, you can refer the case law because some case laws are covered in the study material. So if you have remembered the correct name of the case law, you can write. Otherwise, you can simply write as per the decided case law. And E-forms ke liye, if you have remembered same points we are repeating, that otherwise you can write as per the prescribed form. इवन अश्लीषा इज आस्किंग अबाउट डैशबोर्ड कहाँ है मैम. बहुत आसान है बेटा, पहले तो आप लोगों को ना वेबसाइट पे जाना आना चाहिए, बिकॉज दिस वेबसाइट is providing you lot of the resources that has been given for the benefit of you students. So go to the BoS knowledge portal, my dear friends, and in the BoS knowledge portal you'll be finding in the side, on the left side, a window is there where you have to enter your all the credential. Yes, you can see our in the screen that student login window is there. So just simply enter your credential, your and which course you want to go for, with registration number, your date of birth and everything, and then you can log in. You can log in into that, and there you'll be finding the different all the activities. Even the MCQ dashboard is also there. So there you can see and just simply find out the questions for your practice. Mr. Santosh, ma'am, this is Santosh. My question is whether we must read case study entirely or not. Yes, case study you आपको तो पढ़नी पड़ेगी, otherwise आप आंसर कैसे करोगे? अब बिना केस स्टडी, मान लो केस स्टडी फर्स्ट में कंपनी के नेचर के बारे में बता रखा है कि इट इज अ पब्लिक कंपनी. अब नीचे जाके उन्होंने अगर ये बता दिया कि भाई पब्लिक कंपनी कोई ट्रांजेक्शन है किसी चीज के रिगार्डिंग में, अगर वो पूछ रहा है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पब्लिक कंपनी अगर या प्राइवेट कंपनी है या कोई और नेचर की कंपनी, तो क्या वेदर ही इज एलिजिबल टू डू दैट एक्ट और नॉट. सो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पूरी केस स्टडी को अच्छे से पढ़िए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द रिप्लाई टू वॉट एवर द MCQs इज आस्क्ड फॉर. So that way, because you must have seen at various places, the exemptions have been given to Section 8 companies, government companies, private companies. And suppose because of that, whatever the normal provisions applicable on the public company, there the answer itself gets changed. So isliye read properly, read the whole case study, read the whole facts. And when you are replying, just connect with each and every facts given over there and then give the answer. Yes. Divyansh, you can unmute yourself. Your hand is raised. हेलो, Divyansh? गुड आफ्टरनून मैम. Yes. Yes. गुड आफ्टरनून मैम. मेरे को एक आध डाउट थे, वो पूछने थे. बताइए. मैम जैसे लिमिट्स होती हैं हमारी, जैसे पेनल्टीज हो गई या फिर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की, बहुत सारी जो लिमिट्स हैं तो वो वर्ड्स में दे रखी होती है बेयर एक्ट में. तो वो हमें वर्ड्स में ही लिखने हैं, हम न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं ऊपर किसी में? में भी लिख सकते हैं आप, किसी कोई में भी इशू लिख नहीं है. अच्छा. और मैम सेक्शन जैसे होते हैं, तो अगर सेक्शन ना लिखें तो उससे मार्क्स कट डाउन होते हैं या फिर बस अप्रोप्रिएट लगता है, मोर अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा हमारा, इसलिए? देखिए मार्क्स नहीं करते हैं, लेकिन ये होता है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन की बात है तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, बीइंग अ सिंस वी आर अटेम्प्टिंग द लीगल पेपर, तो समवेयर इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट यू आर एबल टू राइट सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस. ठीक है, कुछ सेक्शंस में आप नहीं मान सकते कि आप लिख पाए, तो वहां तो चल जाता है. बट यस, इफ यू आर श्योर राइट इट, अदरवाइज स्किप इट. सिंपल वन थिंग फॉर्मुला इज, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है. ओके मैम. ओके मैम. और जैसे केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव, हम उन्हें 3 पैरा में लिखते हैं जनरली: प्रोविजन, देन एनालिसिस फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन. तो उसको हमें हेडिंग देने की जरूरत है या फिर बस इन 3 पैरा में लिखना है हमें? नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. और मैम जैसे पेनल्टी बहुत सारी होती है, तो उसका कोई सोल्यूशन है? मतलब बहुत पेनल्टी के सारी लिए है तो मैंने मैं आपको बनाया कि आपको एक वर्क करना पड़ेगा, एक बेसिक होमवर्क करने का. यू नीड टू प्रिपेयर अ टेबल, और टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की पेनल्टीज आप याद कर लीजिए. देखिए हर एक का तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि सिंस नाउ कंपनी लॉ इज पेनल्टी बेस्ड लेजिस्लेशन ही, आपको हर एक प्रोविजन के साथ पेनल्टी क्लॉज अटैच है, तो कितनी आप स्किप करेंगे. तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, सारी नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की पेनल्टीज आप लिख लीजिए, कहीं एक टेबल बना लीजिए. अंडर 127 है अगर आपका अंडर ड्यूटेड डिविडेंड, तो उसमें क्या पेनल्टीज है. अगर मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्टस रिलेटेड अगर आपने कोई मिस स्टेटमेंट किया हुआ है,
तो आप उसमें देख लीजिए क्या है, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज है, वेयर देयर इज अ फ्रॉड कमिटेड, सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट ईच एंड एवरीथिंग बट फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन प्रिपेयर अ टेबल। और कुछ जगहों पे तो ऐसा है जो कॉमन आपको तीन वो मतलब बेसिकली आपको दो स्केल्स मिलती हैं पेनल्टीज की भी, आपको मिलेगी 1 लाख to 5 लाख और दूसरा मिलती है 25 लाख तक की। तो आप वो दो स्केल्स में आप बना लीजिए, उसके अंदर जो जो प्रोविजंस फॉल होते हैं जस्ट राइट इट ओवर देयर। तो बस यू हैव टू एवरी डे यू हैव टू लिटिल बिट रिवाइज करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सा किस स्केल में फॉल होता है, तो दैट वे यू कैन ओके गो मैम। विद इट। और मैम जैसे एमटीपी आई है हमारी मई 24 के लिए, तो कैन वी एक्सपेक्ट कि सेम पैटर्न रहेगा जो मेन पेपर का है? पैटर्न आपका सिमिलर होगा। ओके ओके। जैसे आपके एमसीक्यू 30 मार्क्स का पहले पूछा जाएगा, केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे, और आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी। और जिस मार्क्स के ओके। अकॉर्डिंग है वो आपका, जैसे जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आपका सिमिलर पैटर्न का एग्जामिनेशन में भी आएगा। पोजीशन सेम आएंगे। थैंक यू मैम। सॉरी। थैंक यू मैम। ओके। सवानी सुराना, you can unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So I had a doubt if we can give importance to section-wise weightage you have provided. Sorry, section wise weightage. Section-wise weightage दिया हुआ है, क्या हम उस हिसाब से importance दे सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट गिव्स एन आइडिया कि कितना नंबर का क्वेश्चन उस पोर्शन में से पूछा जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से आपको कितना टाइम देना है, सिंस अगर जिसकी कवरेज ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली यू टेन टू अंडरस्टैंड कि यस इतना पोर्शन तो मुझे प्रिपेयर करना ही करना है इन ऑर्डर टू सिक्योर एटलीस्ट दैट मच ऑफ द मार्क्स, इतना पेपर आप कर पाए एटलीस्ट। तो उसके लिए होता है कि कवरेज गिव्स यू एन आइडिया, आप अकॉर्डिंगली अपना उसमें उतना ही फोकस करेंगे, उसी हिसाब से पढ़ेंगे और उसी हिसाब से अपनी आपको प्रिपरेशन का एक एनालिसिस लग जाता है कि यस आई हैव स्टडीड अबाउट 50% और आई हैव स्टडीड अबाउट 75%। कोशिश यही करनी है कि पूरा अकॉर्डिंगली गो विद इट, पेपर शेल ऑल्सो बी फ्रेम्ड इन दैट मैनर ओनली, जस्ट कंप्लाइंग विद द सेक्शन वाइज वेटेज। तो आपको एक अपना पता चल जाता है और आपको एक आइडिया हो जाता है कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा एग्जाम में। Okay, ma'am. And ma'am, study material, MTP, RTP और amendments इतना काफी है law prepare करने के लिए? देखिए काफी का तो ऐसा है बेटा कि कोई भी चीज काफी नहीं होती है, इट्स जस्ट कि हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना टाइम है और कितने पेपर्स पढ़ने हैं, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर देखा जाए तो अभी आपके पास जो है वो भी कम नहीं है, बट यस इफ यू हैव एडिशनल टाइम यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग ऑल्सो। तो मैम एक्स्ट्रा रीडिंग मतलब क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा रीडिंग्स में देखो, अगर आपको क्या प्रैक्टिस की बात है, कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको अवेलेबल क्वेश्चंस हैं आपने यहाँ पे क्या, अपार्ट फ्रॉम इट आपको लगता है कि अगर बाहर भी कहीं पे कुछ अवेलेबल है, कोई क्वेश्चन बैंक है या कोई चीज है जो आपको लगती है बाहर वाले किसी ने अगर प्रोवाइड किया, तो यू कैन गिव गो ऑन सॉल्विंग इवन वॉट एवर इज गिवन ऑन द इंस्टीट्यूट, गिव ऑन राइटिंग एंड सॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट मच ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग पे, आप समझ लीजिए आपका उतना ही होल्ड और आपका उतना ही अच्छा रिवीजन आपके सब्जेक्ट में हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके मिस सुप्रिया केशारी, you can unmute yourself. Yes, मैम Supriya. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम एक्चुअली कौन सा पेन हम लोग यूज कर सकते हैं, मीन्स राइट वाइल राइटिंग एन एग्जाम? Blue pen. ब्लू पेन। ओके मैम, थैंक यू। मैम बट पेपर में तो ब्लैक पेन कहा जाता है। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम वॉइस इज नॉट ऑडिबल। Now it's audible. Now it's audible. Yes. Yes.
तो बेटा ये है कि आप एक बार एग्जाम डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं एंड बेटर टू गो विद इट व्हाटएवर दे से. ओके. नाउ भानुजा अग्रवाल, you can unmute yourself. हेलो मैम. Hello. हेलो. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. मैम मेरा एक डाउट था कि जैसे एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो सब पेपर के अंदर कंपलसरी होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि उसमें जो एक दो पार्ट्स हो रहे होते हैं वो मुझे नहीं आ रहे होते हैं, तो क्या उसको स्किप करना मेरे लिए मतलब मेरा मार्क को कटवा सकता है एग्जाम में, या Obviously, उसका अगर कुछ आपके इम्पैक्ट होगा पेपर में? अगर कंपलसरी क्वेश्चन में देर आर 4 पार्ट्स, 4 सब पार्ट्स, तो आपको चारों सब पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं. अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 का कंपलसरी क्वेश्चन का सी सब पार्ट नहीं आता, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए. 2-3 पेजेस आप उसके लिए छोड़ दीजिए. यू कैन अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस, और जब आपका टाइम बचेगा तो आप उसको अटेम्प्ट करके आइए. ओके ओके ओके. कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, जैसे 6 में से हमें 5 करने हैं, तो 5 क्वेश्चंस ओके हमें ये एक स्टैंडर्ड बनाना है. हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है घर पे कि हमारा 2.5 आवर्स में कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाए. 15-20 मिनट्स हमें रिवीजन के लिए रखने हैं. तो क्योंकि घर पे अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर क्वेश्चन पेपर विद इन 3 आवर्स. ओके. तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. एक क्वेश्चन के ऊपर आप अपना टाइम एलोकेट करके चलिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स. क्योंकि अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छी तरह आता है, आप यू आर कीप ऑन राइटिंग ऑन दैट क्वेश्चन, बट द मैक्सिमम मार्क्स व्हाट विल यू गेट? ओनली 6, नॉट 7. बट अगर उसके अलावा आपने उसी क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दिया और आपके 2-3 क्वेश्चंस बच गए जो 4-4 मार्क्स के थे, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका चला जाएगा. तो हमें एक एलोकेट टाइम लेके चलना है. 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है. ओके. और क्या हमारा फ्लो ऑफ द क्वेश्चन होगा, कि जैसे अभी मुझे कंपलसरी क्वेश्चन देख के मुझे तो हमेशा डर लगता है कि कंपलसरी क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, तो मैं पीछे से स्टार्ट करती हूँ अपना क्वेश्चन. ओके. तो आप ये देखिए कि पीछे से स्टार्ट करना है या सेकंड क्वेश्चन करना है या फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर इजी लगता है, तो आपको फ्लो भी यू कैन डिसाइड ड्यूरिंग दैट 15 मिनट्स. बट क्वेश्चन का सारे क्वेश्चंस करके आने हैं. एक अपना 2.5 आवर्स का टारगेट रखिए एग्जाम टाइम में, कि 2.5 का रखोगे तो 5-10 मिनट्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट. ओके मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन अटेंड करूंगी तो मेरे जैसे मैं ऐसा पूछना चाह रही थी, जैसे कंपल्सरी क्वेश्चन मैं नहीं किया, मतलब मुझे नहीं आ रहा, वो मैंने अटेंड नहीं किया, तो उसकी वजह से मैंने जो बाकी क्वेश्चंस किए उसका इम्पैक्ट उसके नंबर पे आएगा? नहीं, ऐसा मैं पूछना चाह रही नहीं, हूँ. उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा. जैसे आपका फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, तो आपके 100 में से 15 मार्क्स के अलावा 85 मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट कंपलसरी क्वेश्चन आप नहीं किया तो आपके 15 मार्क्स कट जाएंगे. उसकी बजाय ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस और रिमेनिंग कर दो, ऐसा नहीं कर सकते. नो हाँ नहीं. ओके अंडरस्टैंड. ओके मैम थैंक यू. ओके. मिस श्रुति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. मैम आई वांट टू से कि मैम जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैम कितना लिखना पड़ेगा? जैसे कोई पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें 3 पॉइंट्स लिख दे तो सफिशिएंट रहेगा ना? ये बेटा आपके क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये आपको वहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा. जैसे आपके डिफरेंसेस हैं तो यू कैन राइट 3 डिफरेंसेस. बट कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है जिसमें मे बी वो आपका 2 पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाए या 4 पैराग्राफ भी लगे. तो ये आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. मैम जैसे कोई क्वेश्चन फीचर्स वाला आ जाता है, जैसे उसमें 6 से 7 पॉइंट्स मॉड्यूल में दिए होते हैं, तो मैम जैसे 3 पॉइंट्स सफिशिएंट रहेंगे? अगर 3 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो 3 पॉइंट्स विल बी सफिशिएंट. बट अगर सिर्फ हेडिंग्स दे रखी हैं तो हेडिंग विल नॉट सफाइस. ओके मैम. मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ देना. अगर आप 3 पॉइंट भी दे रहे हो तो इट शुड बी कंटेनिंग लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम. ओके मैम. ओके. Tripurari, you can Tripurari Kumar, you can unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मतलब can I Yes, can I yes. ask you something? Yes, ask your question. मतलब how to prepare in case study? How to prepare for case study? This is your question? Yes, ma'am. Very simple. What I have told. Generally, the case study test your conceptual understanding. क्योंकि उसमें आपको आंसर्स तो लिखने नहीं है डिस्क्रिप्टिव,
आपको ज्यादा रिटेन करने की जरूरत नहीं है. ओनली द थिंग इज दैट यू रिक्वायर टू हैव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रोविजन. So they test how much you have knowledge, how much do you understand the implication of any legal provision. So that way, what the thing is required, read the legal provisions properly and understand what exactly it is saying about and how to go with it. Now, in line with that, in case scenario, certain facts will be given. So there may be some unrelevant facts also in order to confuse you. So if you are aware with the legal requirement of any of the legal provision, at that time you can easily make it out by reading the facts of the case study, and then the question ki yes, whatever the information is given, that is in line with the requirement of the legal provision, that can be solved the case studies questions. मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए. आप कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं, यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको घुमाने के लिए वो आपकी टेस्टिंग भी ऐसे करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए. कोई भी चीज जो इलिजिबल है या नहीं है, वो आपसे नेगेटिव फॉर्म में भी क्वेश्चन पोर्ट्रे कर सकते हैं. So if you have the understanding that this particular provision is not applicable on this, then you'll be able to give answers to any of the MCQs pertaining to it. But हो सकता है आपके प्रोविजन में ये दे रखा है कि ये सिर्फ इन पे लगता है, लेकिन आपसे नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए किन पे नहीं लगता है. So question can be framed in any of the ways. It is only the thing how much you have the understanding of that particular legal provision. So read it carefully and do understand the legal provision. Yes, ma'am. I have second questions. Yeah. In best presentation in case studies. केस स्टडीज में प्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है, वो तो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं. इफ यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, है Tripurari ji, please kindly confirm if you are asking with respect to the descriptive question, then it's a different thing. Then already we have elaborated lot of the times how you should write down the descriptive answer. But if it is an MCQ based, then doesn't require to give the representation at all, because it MCQ based, simply you have to mark the correct option on the OMR sheet. Okay. Yes. Now, Kiran Bala, you can unmute yourself. Kiran, Sweetie Sat Sahib, you can unmute yourself. Ma'am, may I ask question? Yeah, Priyanshu. Just Priyanshu, you have asked so many questions. Just wait for others also. After Sweetie, we will take your queries. Just wait for 2-3 minutes. Okay, ma'am. Okay. Sweetie, yes, please ask. Avni, you please also hold. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. मैम हमारा टाइम तो नवंबर वाला पड़ेगा. हेलो Yes. November. मैम हमारा सी इंटरमीडिएट का नवंबर टाइम पड़ेगा. ओके ओके. तो मैम आप बताइए कि हम कैसे सिलेबस को पूरा करें और कैसे रिवीजन करें पेपर के लिए. ये स्वीटी, वैसे ये जो सेशन है ये May 24 स्टूडेंट्स के लिए है. बट कैसे आप अपनी तैयारी करें, इसके लिए आप स्टडी मटेरियल पढ़िए 2-3 टाइम्स. जो आपका स्टडी मटेरियल अप्रैल 2023 एडिशन है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है नवंबर के लिए भी. उसको आप 2-3 टाइम्स पढ़िए. ऑल्सो अभी हमने आपको एमसीए की वेबसाइट से बेयर एक्ट दिखाया. अगर इफ यू कैन परचेज द बेयर एक्ट इट्स वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन सिंपली सी द ई बुक from the MCA portal. You can see from the Companies Act provisions, LLP provisions. Also, for November 2023, your RTP will be released, your MTP will be released, and same types of sessions will be held. So, आप अपनी practice चालू कर दीजिए, revision start कर दीजिए. कुछ queries होती है तो you can ask us. ओके मैम, थैंक यू मैम. Okay. Avni Patel, you can ask your query. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Yes, ma'am. My question is, जैसे लॉ के कोई क्वेश्चंस में 2-3 सेक्शंस इंटरलिंक होते हैं. लाइक जैसे एक सेक्शन है 127, उसमें है कि इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, तो वहाँ पे पेनल्टी है. तो वैसे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल. तो अगर मैंने वहाँ पे 127 मुझे हिट नहीं हुआ एंड मैंने वो कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 124 लिखा कि वी हैव टू पे डिविडेंड विद इन 30 डेज,
मीन्स वो वाला करेक्ट प्रोविजन कोट किया, लेकिन वहां पे नीचे लिखा कि एज पर ऑल्सो द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट पेनल्टी भी लगेगी इफ दिस प्रोविजन इफ 124 इज नॉट फॉलोड। सो हम ये सही रहेगा कि अगर 127 इज द एग्जैक्ट सेक्शन बट आई कोटेड 124 एंड 127 हिट नहीं हुआ, सो ये कैसे करे या मेंशन ही ना करे 124? मतलब कंफ्यूजन हो रहा है मैम, कैसे? Actually, Avni, we need to see actually the case study with respect to what you're having, मतलब you are asking the question. क्योंकि जब तक पूरी केस स्टडी हमारे सामने नहीं होगी, we cannot make out actually what was the issue. Though you elaborated the things, but in Yeah. order to come out with the correct conclusion, we need to go with the whole case study. Then only we can tell anything about it. Yeah, It ma'am, also actually depends it on is. the question also कि हाँ, what क्योंकि question इसके में क्या reference requirement है. क्या है और क्या requirement है. Yeah. It depends actually. हाँ मैम, ये May 24 की एमटीपी में ही है, लेकिन एक्चुअली मैम इसका सजेस्टेड आंसर है ना, उसमें 127 ही कोटेड है। लेकिन जब मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए वो बिना आंसर देखे वो लिखा, तो मुझे 127 हिट नहीं हुआ, लेकिन मैंने 124 लिखा और उसका प्रोविजन सही लिखा, और 127 लिखने की जगह एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लिखा। अच्छा, you mentioned section 124, 24 दो instead of आंसर should be given 127. of 127. हाँ, तो मुझे ये पूछना है मैम कि अगर चेकर है तो अगर उसने सजेस्टेड में 127 देखा तो, और वो मेरा आंसर कट तो नहीं कर देगा ना 124 देख के? कर सकता है। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, यही हमने आपको बोला है, व्हाट द थिंग वी हैव टेल्ड यू अवनी बिफोर आल्सो, दैट इफ यू आर श्योर अबाउट एनी सेक्शन देन ओनली राइट, बट ओके बाय मिस्टेक यू हैव डन इट, बट यू हैव rest of the thing you have read correctly, so it may be possible that certain marks may be deducted for quoting the wrong answer, so there may be a possibility. या बिकॉज 124 लिखने के सामने उसका करेक्ट प्रोविजन लिखा है और ऐसे इस वजह से, सॉरी मैम वो क्वेश्चन थोड़ा 124 में आपको 30 डेज का बताता है, 127 आपका पनिशमेंट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। कि अगर 30 दिन के अंदर वो डिक्लेयर नहीं करते तो उसके लिए उसकी थोड़ा क्या सा पनिशमेंट है, कि क्या डिपेंड करता है। कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि किस किस केस में कंपनी इज नॉट पनिशेबल, तो ये 127 में हमें बता रखा है। और इन केस ऑफ पनिशेबल, अगर वो पनिशेबल ऑफेंस है तो क्या क्या उसकी पेनल्टीज हैं ये बता रखा है। तो ये आपको लाइन ऑफ डिफरेंस देखना पड़ेगा कि आपको 124 लिखना है या 127 लिखना और है। ठीक है, अगर आपने धोखे से लिख दिया देन ऑल्सो समवेयर यू हैव टू बियर इट, नहीं है ना, तो ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज जस्ट कि हमारे लिए कुछ सीखने के लिए होता है, एवरी टाइम वी लर्न फॉर आवर मिस्टेक्स, तो दिस इज ओके, you can see that you may not do this kind of mistake next time, because somewhere it may be possible that marks may be deducted for citing the wrong section. Kaushik, you can ask your query. Ma'am, good afternoon, ma'am. Good My afternoon. query is how to revise total law in 1.5 days. 1.5 days में तो भाई फिर आप इसे बुलेट पॉइंट्स ही पढ़ के छोड़ दीजिए, फिर तो ये तभी हो सकता है, रिवाइज मतलब तो आप तभी करोगे जब आपने 3 to 4 टाइम्स उसको पढ़ रखा और है। फिर आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट से फिर आप पढ़ पाओगे उसके हेडिंग। इसके जैसे अलावा डे बिफोर एग्जामिनेशन, हाँ तभी आपके नोट्स, हम कहते हैं कि नोट्स आपके बने होने चाहिए। अगर आपने नोट्स बने हुए और आपने उसे 2 से 3 टाइम्स ऑलरेडी आपने डिटेल स्टडी कर रखी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू ओनली जस्ट रीड द मेन पॉइंट्स एंड देन यू कैन कंप्लीट 1.5 days, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल दैट वे। ओके कौशिक। And one more is how to time manage an exam, ma'am. सॉरी, How to manage time in exam, ma'am. टाइम, ये आपकी स्लाइड देखिए, जस्ट सी एट द स्लाइड ऑल्सो, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जामिनेशन। Means how to give good handwriting and as well as complete total answers, ma'am. हैंड राइटिंग तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, रिटन प्रैक्टिस एट होम, उतनी आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ये भी, और दूसरा आप एग्जामिनेशन प्रेशर में जो लिखना होता है 3 घंटे के अंदर, तो वो भी आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि आप विद इन 3 hours यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। आपकी स्पीड भी तभी डेवलप हो गया, स्पीड के साथ साथ आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी, उस पर भी आप अपना थोड़ा वर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी उससे बेटर हो जाएगी। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, मोहम्मद आबिद, यू कैन आस्क योर क्वेरी। मोहम्मद, यस, आपकी वॉइस नहीं आ रही, प्लीज बी लाउडर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सारे एमसीक्यू होंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे? सारे एमसीक्यू होंगे मैम, एमसीक्यू। हाँ, सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। नहीं एमसी केस स्टडी बेस्ड।
तो केस स्टडी बेस्ड आप किस सेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अगर आप देखिए केस स्टडी बात कर रहे हैं या केस सिनेरियो कर रहे हैं, अगेन दिस इज द थिंग, इफ यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट द एमसीक्यू पोर्शन, तो सर्टेन क्वेश्चन विल बी देयर द केस स्टडी बेस्ड यानी कि केस सिनेरियो बेस्ड, and in the descriptive part also there will be a possible, there will be a application based question which may be in the form of small scenarios, so that will also be there. Got it, Mohammed? टाइप में हो सकते हैं. Okay. Yes, Priyanshu. यस मैम. मैम जैसे एमसीक्यूज जो आईसीआई के बीओएस पोर्टल पे है, वहाँ पे ना 15 को एमसीक्यूज होते हैं, 15 to 16, बट अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं उसका कोई सोर्स है, कोई बुकलेट वगैरह? भाई इसके लिए आप, मुझे लगता है कि आपने वो अगर कर लिया वेल एंड गुड है, देन आपकी अगर स्टडी मैट है उसमें भी कुछ एमसीक्यूज है, अपार्ट फ्रॉम दैट आरटीपी है और प्लस आपके एमटीपी है, तो आप थोड़ा वहां से भी करिएगा प्रैक्टिस. बाकी अगर आपको लगता है बाहर भी कोई किताब है प्रैक्टिस के लिए, दैट ऑल्सो यू कैन डू साइमल्टेनियसली. ओके मैम. Hello, ma'am. Yeah, Aisha. Ma'am, my doubt is if in case of MTP, the amount of question, like for FEMA, for example, if we get 13 marks in MTP, so FEMA in main exam will also be for 13 marks, or the marks can fluctuate? देखिए मार्क्स फ्लक्चुएट कर सकता है, इट्स नॉट फिक्स्ड, ऐसा नहीं है कि इतने ही मार्क्स का पूछा जाएगा. दूसरा आपका सेक्शन वाइज वेटेज दिया हुआ है, यू कैन रेफर देयर हाउ मच मैक्सिमम मार्क्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी आस्क्ड. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Ma'am, can I ask a question? Just we will ask one by one. Mohit, Param, this you can unmute yourself. Yes. Good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. I have questions, ma'am. Hello. Please be louder. Ma'am, firstly, the first part of the question is like it is mentioned that the objective of the corporate law paper is to be aware of the provisions of the corporate law and apply them in like application, apply and analyze and apply in practical scenarios. Right? I just wanted your like how, please elaborate on that part. And secondly, ma'am, could you please like, I have like confusion with regard to those words they are mentioned, illustrative words. Like sometimes it is mentioned illustrate, sometimes it describe, sometimes it explain. Okay. You're talking with respect to usage of the verbs in the questions, right? Yes, Mohit. The first thing that you asked is with respect to the objective. So what the objective says about, yes, it says that to develop an understanding of the legal provision and acquire, means you should not only have the knowledge of the legal provisions, but knowledge should be in such a way, up to such a level that you are able to apply the same, the knowledge, the legal provisions within the provided conditions in a practical situation. Means such a condition is given, some practical situation is given. So your level of knowledge should be such that you are able to apply or analyze the situation, and then which relevant law is applicable in the given provision, that you are able to apply it over there and then give your answer. So this is basically about the objectives. Your knowledge level should be in that way. Whatever you are reading in the law paper, so you should be read with this intent only, that you are able to solve and acquire any legal situations or any kind of the practical situations given in the answer. This is the one thing. And the second thing that you have asked is what with respect to the usage of the verbs within the questions, whether identify, explain. So here the simple thing is there कि whenever there's a terminology used in the question like explain, identify, or understand, what do you meaning or what do you understand. So in that case, it means it is a normal direct nature of the question they are asking for. So through the way of the terminology used in the question will give you an idea with what intent the question has been asked and what they are, expecting from you to give your answer as per the requirement. So if suppose there is used now kindly analyze in the question, so that means it is an application and analytical based question. So there you need to analyze. And suppose if it asks, examine, again this is a kind of a terminology which is used and throwing a light that this is the application based of question, and you have to examine within the provided condition what could be the answer to that situation in the light of the relevant legal provision. So that is a
practical application and analysis based questions. So this usage of verbs in the question just gives you an idea what nature of the question they have asked and what they are expecting from you in terms of giving the answers to that particular question. I hope it's clear, Mohit. Yes, ma'am. May I ask just one last question? Just small. Yeah. Ma'am, sometimes the questions are very open-ended, like just the general, you have to just explain the provisions. And if the mark, the weightage is like more than 6 to 8 marks, then are we supposed to like describe all the possible scenarios? Like suppose there is contravention, then that part also, and like are we supposed to like explain all the possible scenarios, or just elaborate on the first part itself, describe the very concept itself? Actually, your voice is a bit cracking, but what I understood, I just understood you were just asking whether for 6 to 8 hours, whether we have to lay down the whole complete provision over there. I suppose this is you are intending in your question. Right, Mohit? No, I'm just, let me just rephrase. Hello, am I audible? Yes, Mohit, now tell. Yes, ma'am. Now, sometimes we are supposed to just, it is very open-ended question, right? But the weightage is like approximately 6 to 8 marks. Okay. I cannot recall the exact question, but I have seen like one in the MTP or RTP or the past year. So in that case, I'm asking is, are we supposed to like describe all the possible scenarios, like the negative part and the positive part, and as well as the contravention, if this is not applicable, if does not, if the provisions are not followed, or are we just supposed to elaborate on the concept itself? Did you get my question? Yeah. Mohit, the thing is that first you need to understand what exactly the question is asked for. If it is asking as a whole, there you have to lay down everything if it is for 6 or 8 marks. But suppose if it is asking with specific reference to anything, either from a negative sense or from a positive sense, then in that case only that word requirement will also suffice the purpose, whether it may be for 6 or 8 marks. So considering what has been exactly asked in the question, if it is open-ended, as you said, then you have to lay down the complete provision. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Shubham Verma, you can unmute yourself. मैम एक बार मैसेज भी चेक कर लो. बेटा बहुत सारी क्वेरीज है. We will definitely check. Just wait. Hello. Just Good afternoon, ma'am. भी चेक कर लो. Shubham. Hello. Yes. बहुत सारी क्वेरीज है. We will definitely check. मैम आवाज आ रही है मेरी? Yes, शुभम बोलिए. मैम मैं अभी लास्ट टाइम पेपर दिया था जिसमें मतलब कि मेरे को 51 मार्क्स आए थे. अच्छा. मैम मैं अभी लास्ट टाइम पेपर दिया था. हो रही है. Some voice is मतलब कि मेरे को 51 मार्क्स आए थे. और मैम मतलब कि मैंने ना आरटीआई से कॉपी मंगवा कर देखा. मेरा रह गया था अटेम्प्ट. उसमें ना बहुत सारे मार्क्स कटे हुए से 5 मार्क्स से उसमें 1.5 नंबर, कोई 2 मार्क्स के उसमें 0.5 मार्क्स. उसमें ना बहुत सारे मार्क्स कटे हुए से 5 मार्क्स से उसमें 1.5 नंबर, कोई 2 मार्क्स के उसमें 0.5 मार्क्स. मैम ऐसे बहुत सारे नंबर कटे हुए हैं. और मैं थोड़ा इंग्लिश मेरी सही नहीं है, मतलब मैं बस टू द पॉइंट लिख देता हूँ, इस वजह से नंबर तो नहीं कटते. कैसे इसको ठीक करूँ? ऐसे बहुत सारे नंबर कटे हुए हैं और मैं थोड़ा इंग्लिश मेरी सही नहीं है, मतलब मैं बस टू द पॉइंट लिख देता हूँ, इस वजह से नंबर आपकी आवाज इको कर रही है. You have operated from two devices, I suppose. Voice is echoing. You have operated from two devices, I suppose. No, ma'am. क्योंकि आपकी वॉइस इको कर रही है, तो दैट इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग. मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम दिए हुए थे एग्जाम जिसमें 51 मार्क्स आए हुए थे लॉ में. मेरे ओवरऑल एग्रीगेट में रह गया था, लेकिन मैंने लॉ में मैंने सोचा था मेरा एग्जाम हो जाएगा. लेकिन जब मैंने कॉपी चेक किया उसमें तो जैसे कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1.5-2 नंबर आए, कोई 4 नंबर वाले है उसमें 1.5-2 नंबर आए, और 2 नंबर वाले में आधे नंबर, बहुत नंबर कटे हुए थे ऐसे. और अटेम्प्ट भी मैंने 85 मार्क्स के किए हुए थे, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा कट गए थे उसमें. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये एग्जाम कैसे होगा. और थोड़ी मेरी इंग्लिश, वैसे हिंदी मीडियम को स्टूडेंट हूँ तो मैं बस टू द पॉइंट लिख देता हूँ प्रोविजंस और लॉ. उसको कैसे सही करूँ? और है शुभम, आई सपोज दैट यू शुड प्रैक्टिस ऑन राइटिंग पार्ट. मुझे लगता है जो आपको भले ही लॉ आता है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपका राइटिंग पार्ट परफेक्ट नहीं है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके अवेलेबल क्वेश्चंस हैं जो भी हैं उनको आप लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो, जिससे आपको थोड़ा लैंग्वेज में कमांड आ जाए.
लैंग्वेज ऐसी चीज है जो एक दिन में तो डेवलप हो नहीं सकती है. दैट इज व्हाट यू सेड कि यू आर लिटिल बिट वीक इन इंग्लिश. So that can be only how you can overpower simply by practicing. आप जितने भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को आप लिखिए. आफ्टर जस्ट रीडिंग जस्ट राइट इट. और आप देखिए कि आपकी लैंग्वेज उस लेवल मतलब सही से आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, क्योंकि समवेयर लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. तो दिस इज व्हाट आई कैन से, जस्ट प्रैक्टिस ऑन द राइटिंग पार्ट. तो राइटिंग से आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी लैंग्वेज पे भी कमांड होगा, प्लस आपकी थोड़ा रिवीजन भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. मैम जैसे कि ना अदर कंपनी लॉ तो हो भी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अदर लॉ में. ये शुभम, आप अभी शुभम थे मोहित थे? नहीं शुभम नहीं है, मोहित. शुभम. अच्छा शुभम ही ओके. थे. मैम अदर लॉ में दिक्कत आती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ शुभम स्टैट्यूज. शुभम उसके लिए यही है. देखो मैं आपको बता रही हूँ, पहले तो आप है ना, देखो कोई भी प्रोविजन है ना उसको ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंस बना लो जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. ठीक है, आपको पता चल जाता है कि अगर कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो आपको पता है, कोई प्रोविजन है तो ये इंपॉर्टेंट, उसको ब्रेक कर लो. ब्रेक करने के बाद क्या, उसको रिटेन करना और उसको लिखना ज्यादा आसान हो जाता है. Then you tend to write whatever the answer has been asked with respect to any of the provision pertaining from this other law portion. Just write it. Just practice more on those side. तो आपका उससे भी वो चीज ठीक हो जाएगा. और आपको ऐसा लग रहा है, पर आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ओवरकम दीज ग्रे एरिया. मतलब आपका जो ये Yes. वीक पॉइंट है, यू कैन ओवरकम दैट वीक पॉइंट. प्रैक्टिस इज ओनली द सॉल्यूशन डियर. Yes, Ashilasha, you can unmute yourself. दिव्यांश. हेलो. हेलो. यस मैम, एक एक चीज पूछनी थी. Yes, first, जैसे yes, दिव्यांश पूछिए. यस मैम, जैसे स्मॉल कंपनी होती है, कोई भी होती है, उसमें लिमिट से रखी होती है कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर टर्नओवर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो जैसे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया, स्मॉल कंपनी का पिछले साल अमेंडमेंट आई थी, 4 करोड़ 40 करोड़ कर दिया जैसे. तो मेरे को ये पूछना है, जैसे बुक में क्या करते हैं, वो पहले लिखेंगे 2 करोड़ और 20 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, एंड देन नीचे वो रूल्स में डाल देंगे वो चीज. तो हम पेपर में कैसे लिखें, रूल्स में अलग से लिखते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 4 करोड़ आप 40 ऊपर ही करोड़ लिख सकते हो. You आप can आप write अपने मेन आंसर में लिख सकते हैं 4 करोड़ and 40 crores. क्योंकि एक्ट ऊपर में लिख आज सकते भी अगर आप देखोगे तो आपको वही दिखाई देगा. ठीक है, जो आपका पहले लिमिट चल रहा था, इट इज ओनली थ्रू द वे ऑफ द रूल्स दे Rules कीप they ऑन have अमेंडिंग. changed. और उसमें जो मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब है, अप टिल दैट लिमिट दे कैन कीप ऑन, वेर एवर रिक्वायर्ड दे कैन इंक्रीज दैट लिमिट. तो आप अपने मेन आंसर में जो रूल्स में जो अमेंडमेंट आई है उसकी लिमिट्स को लेके, दैट यू कैन मेंशन ओवर देयर एंड यू कैन राइट योर आंसर. ओके, थैंक यू मैम. Ashilasha, you please ask. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. Good afternoon. मैम मेरे को ना लो लर्न हो जाती है, बट मैम लिखने में प्रॉब्लम होती है. बेटा इसके लिए तो जितना आप पढ़ोगे उतना ही, और अभी आपको बताया हमें 2 चीज जरूरी है, रीडिंग एंड राइटिंग. तो दोनों में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बारी आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, जितनी बारी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे घर पे, उतने ही आपको ये सब चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, उतनी ही अच्छी तरह आप उसको पेपर में अटेम्प्ट करके आओगे. और मैम एक ना मेरी इंग्लिश मतलब थोड़ी सी वीक है, तो इंग्लिश का कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता लो पे? क्या पड़ेगा इंग्लिश? इंग्लिश का इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ता, बट आपकी इंग्लिश इतना मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ही आपने, जैसे मैम ने बोला था, अर्थ अनर्थ का अनर्थ कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका जो लेजिबल इंग्लिश होनी चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी लीगल टर्म्स उसके अंदर होने चाहिए. तो ये आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? आपकी इंग्लिश, आप जितना स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, जितना आप वेयर एक्ट पढ़ोगे, वो लैंग्वेज आपके अंदर ऑटोमेटिकली इनकलकेट हो जाएगी. ओके ठीक है, मैम. तो जितना आप रीड करोगे, जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छा हो जाएगा. कहते हैं ना, हम जितनी बार और बार मैम बार इसमें किसी चीज को देखते हैं अश्लीषा, जितनी बार बार इस चीज को पढ़ते हैं वो हमें वैसे ही अडेप्ट हो जाती है. यस. अगर हम कोई ठीक है मैम. का कोई डायलॉग बार बार सुनेंगे तो हमें वो एज इट इज याद हो जाएगा. सिमिलरली इज द सब्जेक्ट ऑल्सो, इफ यू कीप ऑन रीडिंग एंड रिवाइजिंग रेगुलरली, तो आपको वो चीज भी उस फॉर्म में आपके अंदर आ जाएगी. रिटेन कर कीप सकते ऑन हो. स्पीकिंग इन दैट मैनर ओनली. यस. तो उसके लिए ठीक आपको है. बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे. इट इज ओनली द एफर्ट्स इनिशियली कि जो आप इसको रीड करेंगे ना रेगुलरली, वो आपका एफर्ट्स होगा, बाकी रिजल्ट आपके सामने होगा. ओके, थैंक यू सो मच मैम. किरण बाला, you can ask. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, my question is, while solving the MCQs in scenario-based question, are we supposed to write all provision, conclusion, or just click the correct answer? नहीं Just किरण fill बाला, the correct option in the बस OMR sheet.
एमसीक्यूज बहुत स्कोरिंग है, आपको मैं बता रही हूँ ना, आपको कोई एक्सप्लेनेटरी लिखना है, नो नथिंग रीजनिंग, नो नथिंग, presentation. यस, नो इशू ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो ओवर देयर। तो आपको बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड, आपको अपना करेक्ट आंसर मार्क करना है, एंड यू विल ग्रैब फुल मार्क्स इफ यू आर राइट दैट वे। And ma'am, my query is also as for the Shubham that some right answers were marked as wrong ठीक है, इसके लिए तो मैं in आपसे ये previous कहूंगी कि आप attempt. एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बात करें कि व्हाट सो हैज हैपेंड, बट यस Yes. Also compare your answers with the suggested answers, what answers we have given. Just compare for yourself. Okay? तो you Yes, will ma'am. get an idea कि आपके मार्क्स कहाँ पे कटे, क्यों कटे, कहाँ पे आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ओके? तो आप So suggested मैम answers थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है ना कि राइट लिखा, उसको एकदम मतलब लेस मार्क्स ही नहीं, पूरा रॉन्ग कर क्रॉस कर दिया, तो लगता है फिर नेक्स्ट टाइम भी सेम थिंग विल हैपन, देन व्हाट विल आई डू? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट समटाइम्स आपके आंसर्स में ही कुछ लेक्यूना होता है कि आपको आंसर्स सही मार्क्स नहीं मिले, तो ये चीज भी हो सकती है, बट आप उसको अपने इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ। ओके मैम। देन श्रेया गुजराती, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, ma'am. I wanted to ask that, am I audible? Yes, please be louder. Yes. Ma'am, I wanted to ask that the MCQs and case scenario booklet available on BoS portal are of old scheme. So are they applicable for May 24 examination? नहीं बेटा, बेटर है आप उसे रेफर ना करें, गो विद द लेटेस्ट वॉट एवर एमसीक्यू डैशबोर्ड हैज प्रोवाइडेड फॉर यू, इट इज इन लाइन विद योर recent syllabus actually, and the Yes. coverage whatever is forming the part of your study material. There are additional informations also, there's additional coverage with respect to the rules and the acts. So basically it's better to refer the latest thing, whatever is relevant and applicable for you. Avoid referring the old editions. Ma'am, for अभिजीत, May 24, it is not there on BOS नहीं portal. उसपे So अभी तो आपके लिए एमसीक्यू Then डैशबोर्ड dashboard. है, तो काइंडली गो विद इट, वॉट एवर इज अवेलेबल, Yes. kindly go to and let's see what's happened in the coming time. okay, ma'am. Thank you. Abhijit, you can ask your query. Yes. Abhijit, Avni. Ma'am, specifically in case of जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट, जैसे वो एक्ट पूरा रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन जब उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, सो इट हिट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, और वो प्रोविजन कोट नहीं कर पाते। लाइक एक्ट पढ़ते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस एंड मेनी थिंग्स आर गिवन देयर, बट क्वेश्चन एक पॉइंट पे तो क्लिक ही नहीं होता है कि ये एक्ट में था भी, लाइक स्पेसिफिकली फॉर iOS एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट। एक्चुअली iOS और जनरल क्लॉज एक्ट है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, एंड ऑफ कोर्स दिस प्रॉब्लम इज लॉट ऑफ बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। एक्चुअली अगर आप जनरल क्लॉज एक्ट की बात करें तो डिफाइंस जनरल हाउ द लॉ कैन बी इंटरप्रेटेड वेयर नथिंग इज गिवन अंडर द स्पेसिफिक एक्ट। तो वहां पे उसका जनरल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, और ये जो जनरल इंटरप्रिटेशन होता है, इट वेरीड फ्रॉम वन केस टू अनदर। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने यहाँ पे ये डिफाइन किया तो ये हो गया, वहां वो डिफाइन किया तो वो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी डिफाइंड है। इफ यू सी इट इज ऑल्सो देयर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑल्सो, if you see under the transfer of property act also, and if you see it's there in the GC also. तो सब जगह उसका अलग अलग अर्थ है, लेकिन अगर स्पेसिफिक एक्ट में वो टर्म डिफाइंड है तो इट विल गो विद एज दैट स्पेसिफिक एक्ट. But if nothing is specified in the specific act, then you at that case you come out with a general understanding, and that is being given under the GC Act, General Clauses Act. तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है, क्योंकि हम जो बाकी चीजें पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट है या LLP है, तो वहां तो स्पेसिफिक चीजें आपको बता रखी है, तो यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम. जीसी में ये चीज हो जाता है. तो जीसी में आपकी जो चीजें वो आपके केस लॉस के बेसिस पे आती है. कुछ लॉज जो होते हैं आपके प्रेसिडेंट बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आपकी स्टडी में अगर आपको कोई केस लॉस के माध्यम से अगर कोई चीज समझाई गई है तो गो विद द केस लॉस, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब जैसे ट्री है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मानोगे या नहीं मानोगे, तो इट केम आउट थ्रू शांताबाई केस लॉ, जो कि AR का केस था 1958 का. तो इस तरह से क्या होता है, वो केस लॉ के बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि अंडर दिस GC एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रीज भी आते हैं, पर वही चीज अगर आप उसमें जाएंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वहां पे वो चीज को वो नहीं कंसिडर किया जाता है. तो ये चीज मैं आपको ये बता रही हूँ, डिपेंड करता है. तो रीड द एक्ट
And whatever the reference of the case law is given over there, in line with that reference of case law, you read the complete things as a total outcome. Sometimes your answers are aligned with the case laws also. और it comes with ultimately, आप इस nature के जितने भी questions available है on the available sources, kindly go with it and read it so that you have more understanding and clarity on the same. Shreya Gujarati, you can ask. Shreya, Sweetie, Ayushi. हेलो मैम। Yes. मैम हम कह रहे थे कि नवंबर अटेम्प्ट के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा, जब से भी होनी है, जस्ट वेट इट। Meanwhile आप recorded lectures देखना चालू कर दो। बिल्कुल, डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाटएवर इज Yes. अवेलेबल यूटिलाइज इट। ओके स्वीटी, राइट? यस मैम। ओके। Yes. Ayushi. Yes, Ayushi. Good afternoon, ma'am. Good I afternoon. wanted to ask that for the MCQ portion, you said that OMR sheet will be provided. So, is there any time limit within which MCQs are to be completed or submitted? For part A, MCQs and part B descriptive, total time is 3 hours plus 15 minutes reading time extra. Okay, thank you, ma'am. Okay. Shubham. मैम जैसे अभी मैम ने बताया कि केस लॉ जैसे है, मैम ये केस लॉ कोड करना जरूरी है? मतलब कि कोई क्वेश्चंस में अगर केस लॉ का रेफरेंस दे रखा है तो हम उसे वहां पे मेंशन करें या फिर छोड़ दें? और सेक्शन देखिए शुभम, ऐसा है, अगर वो केस लॉ आपको पता है तो लिखिए, वरना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट स्टूडेंट नोज ईच एंड एवरी केस लॉ, एंड देयर आर मेनी केस लॉज। और ऐसा तो नहीं आपने सिर्फ एक ही केस लॉ जो स्टडी में दिया है, जो स्टडी में वो तो फिर भी ठीक है, वो तो आपको पता है, बट इट कैन नॉट बी एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि वो भी वही केस लॉ करे। अगर आप श्योर हैं, आपको पता है सपोर्टिव में, then only cite it, otherwise you can skip the case laws also. And if it's formed the part of the study material and something is lying and based on the same, then definitely you can give over there. और मैम सेक्शन की जगह सब सेक्शंस भी आप अगर सब सेक्शन को याद करना जरूरी नहीं है, even citing of it is not mandatory or required as such. Only main section is sufficient in that case. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So by and now, I think no queries left from the Zoom link. So many students have been joined today, and so many queries they have asked through portal, through Zoom link. So it was a very interactive session. And even Yes. we are really very pleased to see that students are so interactive, so participative with the positive mindset, and they have made this session really successful, because this is the platform where you actually get connected directly with us, and we also come across with the real-time queries, whatever you are facing up in the understanding and reading of the subject, and that way it has been made a valuable session, and it is a great thankful to you all students for being such a wonderful participation and you can say the viewers, and thank you and wish you all the best for your future. All the very best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Thank you ma'am. to all. Thank you. Bye.